आइटम नंबर 7A माननीय श्री पंकज चौधरी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से मैं सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2025 से प्याज HS 070310 पर 20% निर्यात शुल्क को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की सूचना संख्या 27/2011 सीमा शुल्क में संशोधन के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित भारत के गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 19/2025 सीमा शुल्क हिंदी तथा अंग्रेजी में एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8 महासचिव जी। Honorable Madam, I have to report two messages received from Rajya Sabha regarding election of 10 members of Rajya Sabha to the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and election of 7 members of Rajya Sabha to the Committee on Public Accounts. आइटम नंबर 9 माननीय डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2024-25 के तीसरे प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 10 माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। माननीय महोदया, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध विभाग संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 325वें, 326वें और 327वें प्रतिवेदनों की प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 11 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2024-25 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्वित्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देता हूं। आइटम नंबर 12 माननीय श्री अर्जुन मेघवाल जी। Honorable Chairperson Ma'am, with your kind permission on behalf of my colleague, Shri Suresh Gopi ji, I rise to make a statement mention against his name at serial number 12 in today's list of business regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 364th report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 343rd report of the Committee on Demand for Grants 202324 pertaining to the Ministry of Tourism. Thank you. आइटम नंबर 13 माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी। Respected Chairperson Ma'am, with your permission, I want to make the following statements regarding the status of implementation of recommendations contained in the third report of Standing Committee on Finance on demands of grant 2019-20 pertaining to the Ministry of Corporate Affairs. Second, the status of implementation of the recommendations contained in the ninth report of Standing Committee on Finance on demands for grant 2020-21 pertaining to the Ministry of Corporate Affairs. Thirdly, the status of implementation of the recommendations contained in the 15th report of Standing Committee on the Finance on action taken by the government on the recommendations contained in the third report of the Committee on demands for grant 2019-20 pertaining to the Ministry of Corporate Affairs. Fourth, the status of implementation of recommendations contained in the 20th report of the Standing Committee on Finance on action taken by the government on the recommendations contained in the 9th report of the Committee on demands of grant 2020-21 pertaining to the Ministry of Corporate Affairs. Fifth, the status of implementation of the recommendations contained in the 27th report of Standing Committee on the Finance on demands for grant 2021-22 pertaining to the Ministry of Corporate Affairs. Sixth, the status of implementation of the recommendations contained in the 37th report of the Standing Committee on the Finance on action taken by the government on the recommendations contained in the 27th report of the Committee on demands of grant 2021-22 pertaining to the Ministry of Corporate Affairs. Seventh,
the status of implementation of the recommendations contained in the 42nd report of the Standing Committee on Finance on demands of grant 2021-23 pertaining to the Ministry of Corporate Affairs. 8th, the status of implementation of the recommendations contained in the 49th report of the Standing Committee on the Finance on action taken by the government on the recommendations contained in the 42nd report of the Committee on Demands for Grant 2022-23 pertaining to the Ministry of Corporate Affairs. 9th, the status of implementation of the recommendations contained in the 56th report of the Standing Committee on the Finance on Demands for Grant 2023-24 pertaining to the Ministry of Corporate Affairs. 10th, the status of implementation of the recommendations contained in the 63rd report of the Standing Committee of Finance on action taken by the government on the observations/recommendations contained in the 56th report of the Committee on Demands for Grant 2023-24 pertaining to the Ministry of Corporate Affairs. Thank you. माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले को पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यक्तिगत माना जाएगा। वित्त विधेयक 2025, माननीय श्री पंकज चौधरी जी। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए बैठिए प्लीज बैठिए। प्रस्तावनाओं के प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय डॉक्टर शशि थरूर जी। बता दीजिए वित्त मंत्री दूसरे हाउस में। माननीय सदस्यगण, वित्त मंत्री जी अभी दूसरे हाउस में है, कुछ ही देर में वो उपस्थित होंगे। प्लीज बैठिए। माननीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी उसके बाद आ रही है मैडम, और एमओएस बैठे हैं, पंकज चौधरी जी हमारे एमओएस बैठे हैं। अदर हाउस में बैंकिंग बिल चल रहा है, फाइनेंस का ही बिजनेस चल रहा है। आप बैठिए माननीय सदस्यगण, मंत्रीगण बैठे हुए हैं। प्लीज बैठिए। अरे ये आ रहे हैं वो, ये मंत्री बैठे हैं ना, पंकज चौधरी मिनिस्टर नहीं है, ये मिनिस्टर नहीं है क्या? ये मिनिस्टर है। आप प्लीज बैठिए। संसद की गरिमा को रखिए। प्लीज बैठिए। माननीय डॉक्टर शशि थरूर जी। नो बैठिए, प्लीज बैठिए। अभी बुलवाते हैं। प्लीज बैठिए। शशि थरूर जी। डॉक्टर शशि थरूर जी। माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। माननीय डॉक्टर शशि थरूर जी। Madam, we are ready, but the finance minister is absent, madam. आ रही हैं, वो भी आ रही हैं, और अभी फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं, राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। प्लीज Ma'am, I'm ready to speak. डॉक्टर शशि Thank you, थरूर। Madam Chairman. Madam Chairman, a few years ago, I was constrained to observe of my absent friend, the Honorable Finance Minister, that her budget speech in this House reminded me of the garage mechanic who said, I couldn't fix your brakes, so I made the horn louder. Looking at this year's finance bill in her absence, I think she has slightly changed her tune. She's now saying to taxpayers, I couldn't repair the roof, so I brought you an umbrella. This finance bill is a classic case of patchwork solutions at a time when the nation needs clarity, conviction, and decisive leadership. The government's economic management finds itself in the grasp of deep-rooted structural challenges, Madam Chairman,
We've seen growth targets being scaled down. Double-digit growth is apparently unattainable, and the ambitions of maintaining a respectable growth rate of even 6% and above are fading away. The portion of our population engaged in agriculture is higher than ever, while manufacturing has shrunk to around 15% of GDP, the lowest in this century, ma'am. Our informal sectors of employment are soaring, and dependence on foreign capital inflows to manage the current account deficit is growing amidst a staggering situation where our exports are stagnating, production is not going up. Even those who are earning 5 or 6 times the per capita income are now struggling to maintain their standard of living. So Viksit Bharat by 2047 is a laudable objective for a quarter century from now. But how does this finance bill begin to get us there? It has taken the government years to finally realize that just 2% of Indians, the hardworking taxpayers, ma'am, have been really carrying this country on their backs. Individual taxpayers, mainly the salaried middle class, were already contributing more than the corporations last year, and yet no action was taken. That would have been the time to act, as I pointed out in last year's budget debate. But now, in the current financial year, corporate taxes have crawled up by 8%, while individual and non-corporate taxation has soared by 21%. Now the government finally wakes up and gives something of a tax break to the salaried middle class. Who else is financing the government? The Aam Aadmi, through indirect taxes, most notoriously GST. Instead of the good and simple tax we all wanted, India has multiple and confusing GST rates, including the highest GST rate in the world at 28%. But tax revenue still lags at 18% of GDP. In contrast, China has 13% GST cap, but they collect 20% of GDP with it. Vietnam has an even lower 8% cap and collects 19% of GDP. Thailand, GST is only 7%, ma'am, and they get net 17% of GDP. Now, beyond exorbitant rates, our system carries a dubious tax, the dubious burden of being the most complex tax in the world. 77 countries have GST, and they impose only 1 or 2 tax slabs. This multi-rate structure in our country has only further raised the compliance burden for businesses. Indeed, bifurcating input tax claims based on different product tax rates is a significant hurdle for businesses. There's supposed to be an advanced ruling mechanism that should help, but I can tell you from the MSE food sector in Kerala, the MSMEs there, that applications are left unheard for months, even years. And our traditional snacks in Kerala, like Parampuri, Vada, Ada, Kolkata, all face an unfair 18% tax simply because of the absence of an assignable HSN code. With a shelf life of under 24 hours, these snacks often go unsold and are discarded. But sadly, their input tax claims are denied, leading to mounting losses. This system, I'm sorry to say, is less a tax and more a punishment. So much for the claims of ease of doing business. And where does all this money, all this tax, direct and indirect, end up? Mostly lost, apparently, because 28.59 lakh crores, both disputed and undisputed, in unrealized tax revenue has been sitting untouched in this finance bill, nearly double the amount from fiscal year 21. Imagine if this was actually realized, our entire fiscal deficit for fiscal year 25 could be vanishing overnight. But no, instead, 13.97 lakh crores in corporate tax remains unrealized. Only 9.11 lakhs has been collected. Similarly, non-corporate tax demand stands at 14.62 lakh crore. Collections lag at 10.45. And GST evasion has doubled to 2 lakh crores already this year. With 18,000 fake entities caught, many more remain undetected. Now, while all this is going on, between 2017 and 2022, 35,000 wealthy Indians, the so-called high net worth individuals, left our country to relocate abroad, complaining of tax terrorism. Obviously, when rich people migrate, their wealth also migrates with them. And this affects revenue generation, wealth creation, employment opportunities. Surely we need to review not just their effective tax rates, but the manner in which tax demands are made that drive such people away. Unleashing tax terrorism is self-destructive, madam. It reduces sources of long-term revenue from future wealth creation.
The government's attempt to raise money through other means, all failure. Through disinvestment, underwhelming results. They've abandoned the strategy. Reports suggest that the PLI scheme, introduced with such fanfare, will also be allowed to lapse because it hasn't worked. Such is the state of affairs that the government now relies on the Reserve Bank of India's dividend as a major source of revenue. That's neither sustainable nor ideal. And this bill prompts another question, Madam Chairman. If the government is set to forego almost 1 lakh crores in direct tax revenue and 2,600 crore in indirect taxes, on top of the inevitable drop in import tariffs due to likely reductions in customs revenue prompted by our responses to the American government policies, and on top of that declining capital gains tax amid a stock market downturn, then revenue receipts are going to be further squeezed across all these categories. How can the government claim it will cut the fiscal deficit to 4.4% for the coming financial year? The maths don't add up. Is our finance minister, welcome Madam Finance Minister, are you offering us Jadugar economics? How can we reduce the fiscal deficit in these circumstances? And if we do, who pays the price? And let me ask, ma'am, very frankly, why is it that only 2% Indians are paying income tax? The reasons are endless: unemployment, income inequality, poverty, inflation. But can the government continue to run itself on the backs of just 2% of our people? While the economy is crawling forward at a snail's pace, income distribution is as lopsided as ever. The top 1%, their share more than doubled, from 10% in 1991 to 23% in 2023. And then the top 10%, so the top 1% went to 23%, the top 10% went from 35% to 59%. And the bottom 50% of our population, their share of our national income has shrunk from 20% to 13%. Clearly, prosperity and growth aren't slow for everyone, just for those of the bottom half of our population. But they're the ones who need progress the most. Madam Chairman, it's becoming almost painfully repetitive. Every time we talk about unemployment, we're faced with the same grim statistics. Reports predict we need to generate 10 million jobs annually from 2024 to 2030 to keep up with the growth targets. Yet the skill mismatch is glaring. Only half the graduates of our country possess the skills required by industry, leaving a significant gap in their employability. And skill development, sadly, has been a failure. Just look at their placement figures. Now, while unemployment is a concern, the assessment of poverty is troubling for a different reason. The NFHS 5 data reveal that 14.96%, 15% of India's population is multidimensionally poor. Now, shockingly, the government went 11 years without any consumption survey, any expenditure survey, leaving a significant void in assessing poverty levels until it was finally conducted in 2024. But here's the real issue. Our calculation is still based on the 2011 census, especially the sampling frame. An outdated data set, completely unfit for assessing the present socioeconomic reality, is what leads the government to say they've defeated poverty. Well, according to the World Bank, the international extreme poverty line is $2.15 per person, and that's daily. And they use a higher poverty line of $365 for the lower middle income countries. But India's median poverty line is only 1/10 of that World Bank figure at the present exchange rate, which would make us wonder if we truly understand the scale of poverty around us. It's high time we acknowledge that the true extent of our poverty is very grave, and we must have more accurate assessments to ensure that our efforts at poverty alleviation really work and have a lasting impact on the millions who continue to struggle in silence. The hopes of economic growth and prosperity, Madam Chairman, seem to be slipping further away as unemployment rises, poverty deepens, jobs are scarce, wages are stagnant, and just when struggling households think they might catch a break, instead of easing the burden, small businesses find themselves drowning in compliance rules. Informal workers are still making up a chunk of the workforce, and they're pushed further to the margins. So since the finance minister has been kind enough to join us, let me capture the present situation in some light verse. Tax our petrol, tax our shirt, tax our footwear, tax our dirt. Tax our mobile, tax our calls, tax our hovels, crumbling walls. Tax our salary, tax our ride, tax our mithai on the side. Tax our sorrow, tax our cheer,
tax our future year by year. GST income tax forms pile high, cesses, surcharges make us sigh. Roads with potholes, trains that derail. Where does it go? Is it all a fail? When we ask, is this all in vain? You smile and say, it's for the nation's gain. And if we ask you to try and fix it, you point and say, you will be Vixit. Yet still we pay with a patriotic heart, hoping our cash will play a small part in building a future bright and fair for the nation we love beyond compare. And let me say, ma'am, that the 5 southern states, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, and Telangana, are amongst India's strongest economic engines. They are paying taxes. They generate over a quarter of the country's direct taxes. They contribute 28.5% of GST. But when it comes to receiving their fair share, they get a mere 15% of the centre's tax pool. How is this acceptable? How can states that fuel the nation's economy be expected to sustain their growth with such an inadequate return? By all means, let us ask the richer states to help the poorer ones, but surely not in such a disproportionate manner. The Finance Bill 2025 is yet another move by the centre to hoard revenue here at the state's expense. By slashing basic customs duty on several items that are shared with the states and shifting the difference to agricultural infrastructure and development cess, AIDC, which the centre keeps entirely, this ensures that states lose out. So AIDC share is increased, centre deprives the states of extra rightful revenue. Its growing addiction to cesses is not only opaque, but also undermines fiscal federalism. And yet, for all its love of cesses, there's one the centre just can't seem to stomach: the GST compensation cess, which was intended to offset the loss of revenue to states after the GST implementation and has been extended only till March 2026. That money actually belongs to the states. States have repeatedly demanded that their share in vertical devolution be raised from 41% of revenues to 50%, a reasonable demand, but one that continues to be ignored. And what happens when states have grievances? Nothing. Once the Central Finance Commission submits its report, it dissolves, leaving states with no constitutional mechanism to challenge or negotiate their share. Where is the accountability? We could have had an independent fiscal council to serve as a redressal body, ensuring that states have a say in how their hard-earned revenue is allocated. And I urge the finance minister to consider such a method, because shouldn't those who contribute the most to the nation's economy have a voice to receive a fairer share? Or can the cycle of economic injustice just continue unchecked? Let me turn, Madam Chair, to my own state, because Kerala's share of tax out of the divisible pool seems to be on a permanent downward slide, from 3.8% under the 10th Finance Commission, 1980 to 85, to 3% in 2000 to 2005, and now under the 15th Finance Commission, is down to a mere 1.9%. 18,000 crores lost since the last one. Now, this is for a state which is struggling to meet routine expenditures and is sinking into debt that has now crossed 4 lakh crores. But always the expectation of Kerala seems to be pay more, receive less, and somehow keep thriving. Now, amid this financial crunch, Madam Chairman, when the state government sought 4,500 crores in special assistance to tackle coastal erosion, rehabilitate fisherfolk through the Punargehem project, modernize fishing harbors, was given no response. Lakhs of poor fishermen are left struggling under a trifecta of crises: low prices for their catch, depleted fish stocks due to overfishing, the removal of kerosene subsidies by this government for their boat engines, and yet no relief package has been announced. Even Kerala's 1,000 crore rupee request to address human-wildlife conflict was ignored. Part of a larger pattern of neglect evident in the plight of the people who are victims of wildlife attacks, fishermen left adrift, ASHA workers still deemed volunteers despite their critical role, and key projects left unfunded. While the centre has earmarked 25 lakh crore for the states, Kerala receives less than 40,000 crore, a drop in the ocean. The state also failed to secure a 24,000 crore economic package for financial stabilization and the much-needed aid for the Vilnius port project in the current budget. All we have got, and that too after the intervention of the Honourable Governor, is a loan of 5,900 crores and no grant.
Apparently, when it comes to equitable financial support, Madam Chairman, some states are more equal than others. Now, the centre's masterclass in delay tactics continues. Wayanad's landslide victims are still waiting for aid that never seems to arrive, despite the Kerala High Court actually urging the government for immediate action. The state government conducted a post-disaster needs assessment and estimated that 2,220 crores was required for recovery and reconstruction, submitted to the centre on November 13th, 2024. Nothing has come. And this is supposed to be urgent disaster relief. I ask you, Madam Chair, instead of releasing much needed funds like this, the centre still insists that Kerala must first exhaust its own balance in the state disaster response fund for all other disasters before receiving any help for Wayanad. All this while thousands of lives and livelihoods are at stake. But it's part of a larger pattern of neglect and unfulfilled promises. From healthcare and infrastructure to livelihood support, Kerala has been systematically sidelined. I've been pleading in this House many times for help in addressing the severe coastal erosion problem. My own constituency has lost 64 square kilometers of territory to the sea while I have been MP. Bharat Mata ki dharti, lost forever. But the centre says it's not their problem, and the state says they have no money for the sea walls and groins needed to save our coast. Beaches where youth played football or cricket in my first years as an MP have disappeared today, man. Who is going to help us? And key projects that could transform Kerala's infrastructure and economy continue to be stuck in limbo. The All India Institute of Medical Sciences remains a mirage despite many years of repeated requests. 22 aims have been sanctioned across India. Keralites are still waiting. Similarly, the National Institute of Speech and Hearing in Thiruvananthapuram was promised an upgrade to a national university for rehabilitation and disability studies in the union budget of 2015-16. Explicit commitment, 10 years later, no action. A promise to establish a national university for Ayurveda in Thiruvananthapuram has recently materialized in Gujarat. It seems that where Kerala is concerned, promises are easier to make than to keep. Now, while these delays and denials are Kerala's burden, other aspects for other states, for all our country, the Indian economic landscape is very worrying. The economic survey suggests that foreign investment is moving 2 minutes, ma'am. But in fact, net FDI has been slowing year after year, and outflows are surging. In just April to October last year, a whopping $34.1 billion left the country through disinvestment and repatriation, which is an increase from $26 billion the previous year. India's share of global FDI, even excluding China, is shrinking. But sure, let's keep celebrating token investment announcements while the real money quietly walks out of the door. And it's not just foreign investment that's pulling back. Indian private investment has also been shrinking from 25% of GDP in Dr. Manmohan Singh's time, 2008, to just 13-14% of GDP since 2020. What's the culprit? Weak domestic demand that has dampened confidence and kept businesses from putting their money back into the economy. And we still expect to believe that everything is nice on track for Viksit Bharat. Where are the decisive measures to drive export-led growth, to seize the China Plus One opportunity, to revive investments in manufacturing? Does India not wish to absorb the capital leaving China? What are we doing about it? We're abandoning PLI, and this bill offers nothing new to inspire economic confidence. Ma'am, just finished. The service sector alone cannot drive broad-based growth. Industrial expansion is essential to create jobs and build economic resilience, and we must say that there is no large national strategy in this bill to achieve that. To conclude, Madam Chair, we're left with a finance bill devoid of vision and lacking in resolve. The people of India deserve decisive action and forward-thinking policies, yet their aspirations have been set aside. If Viksit Bharat is to come, it will be built by those who are currently unemployed, who have no money to spend, few opportunities to improve their lives. I urge the finance minister and the government to think about them. India requires and deserves a strategy that addresses their deepest needs and aspirations. And sadly, we're yet to see one in this bill. Thank you, Madam Chairman, and Jai Hind. माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और इस देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी का शुक्रगुजार हूं
कि पूरी दुनिया वित्त के मामले में कराह रही, अमेरिका हो, यूरोप हो, यूके हो, पूरे दुनिया की इकोनॉमी हिली हुई है। सभी जगह करंट अकाउंट डेफिसिट का मामला चल रहा है। इवन अमेरिका जैसे देश में भी ट्रंप यदि टैरिफ की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं कि बराबरी का टैरिफ हम पूरी दुनिया में लगाएंगे, इसका कारण यह है कि यूएस जो अपने आप को वर्ल्ड का नंबर 1 हमेशा मानता है, मानता रहता है, उसकी इकोनॉमी हिली हुई। लेकिन पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाहे आईएमएफ का रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो, चाहे किसी का भी रिपोर्ट हो, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट हो, चाहे कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे थे उनकी खुद की रिपोर्ट हो, वो सब ये कहती है कि भारत एक ऐसा सितारा बनकर उभरा है जिसने कि पिछले 10 साल में दुनिया को मात देते हुए अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी की तरफ अपने आप को खींचा। 2014 तक, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है कि 2014 तक भारत की इकोनॉमी केवल और केवल 2 लाख करोड़ की थी, 2 लाख करोड़ डॉलर की थी। आज वो 10 साल में 4.5 लाख करोड़ डॉलर की है। ये पूरे सदन को और पूरे देश को जानने वाली बात है कि केवल जो है 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2014 तक, 70 साल में आपने इस देश को 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी दी, और हमने 10 साल में उसको लगभग 4 साढ़े 4 करोड़ ट्रिलियन डॉलर में जो है पहुंचा दिया है। क्या है, क्या है? आपको दिखना नहीं आता? नहीं देखे। अभी कई एक लोगों ने कहा कि 35% जो यहाँ के अमीर आदमी हैं उन्होंने अपनी नागरिकता बदल ली, किसी देश में चले गए। थरूर साहब, आप तो बहुत दिन विदेश में रहे हैं। डॉम टैक्स के बाद यूके का क्या हाल है? 50% लोगों ने, अमीर लोगों ने वहां का जो है नागरिकता छोड़ा है। 50% लोगों ने, वो दुबई के नागरिक हो रहे हैं, वो सिंगापुर के नागरिक हो रहे हैं, वो बनातू के नागरिक हो रहे हैं, वो जितने टैक्स हेवंस हैं उनके नागरिक हो रहे हैं। अमेरिका में पिछले 15 साल में क्या हुआ? बाइडेन के राज में पिछले 4 साल में लगभग 22%, जो अमेरिका कहता था कि हम पूरी दुनिया को अब दिशा देते हैं और सभी अमेरिका आना चाहते हैं, 22% लोगों ने वहां की नागरिकता छोड़ी है। 22%। और पूरे यूरोपियन यूनियन में 33% लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। आप भारत की बात करते हैं। लोग यदि टैक्स छोड़ना चाहते हैं, विल सब्सटेंशिएट, जो मैं कहता हूं उसको मैं सब्सटेंशिएट करूंगा। आई नो द रूल एंड विल सब्सटेंशिएट इट, सो डोंट वरी। ये जो है, ये जादूगर का बजट नहीं है, ये मजदूर का बजट है। हम मजदूरी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 साल से जो, इसलिए आपने जो कहा कि ये जादूगरी का बजट है, ये जादूगरी का नहीं, ये मजदूरी का बजट है। और जो आप लोग कहते हैं ना, कांग्रेस का क्या है सिद्धांत? कांग्रेस का सिद्धांत है सुखार्थिनो कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुख। जो सुखी आदमी हैं, जो इनको हरा हरा चीज दिखाई देता है, उनको कभी विद्या नहीं होती। आप लोगों को कभी ज्ञान नहीं होगा, मुझे लगता है, क्योंकि आपको मोदी का विरोध करना है। एक पॉइंट एजेंडा है कि सरकार की सभी चीजों का आपको विरोध करना है, और उस विरोध में आपको कोई चीज अच्छा नहीं दिखाई देगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब हमारी सरकार बनी 2014 में, टैक्स जीडीपी रेशियो क्या था? टैक्स को आप यदि कैलकुलेट करते हैं पूरी दुनिया में या देश में, तो सबसे पहला होता है कि टैक्स जीडीपी क्या था। टैक्स जीडीपी मैं बताता हूं कि 2009 में टैक्स जीडीपी रेशियो था 6.8। 2010 में यह चला गया 6.7। 2010 में यह चला, 2011 में चला गया 6.6। 2012 में चला गया 6.5। जब हमने चार्ज लिया
टैक्स जीडीपी रेशियो 6.5 था। क्यों? वाजिद अली का सामगाना था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था, सारे के सारे करप्शन जो है भरे पड़े थे, किसी के ऊपर जो है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैंने तो एक कहानी का जिक्र किया। उस कहानी में वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब हुआ करते थे और उनके ऊपर जो कहानी लिखी गई वो कहा गया कि आज टैक्स जीडीपी रेशियो लगभग 11.7% पर है। मध्यम वर्ग को 12 लाख का जो है, जो सैलरीड क्लास है, उसको 12 लाख और उसके एग्जेम्पशन को यदि जोड़ लें तो लगभग 13 लाख का जो है हमने फायदा पहुंचाया है। और सारे परेशानी की जड़ इस पूरे बजट में, पिछली बार मैंने बजट का भी भाषण सुना और अभी भी मैंने फाइनेंस बिल पर भाषण सुना, वही बोन ऑफ कंटेंशन है। आज आप टैक्स कंसेशन, टैक्स रिबेट, मध्यम वर्ग, गरीब सबकी बात करते हैं। कभी आपने देखा कि आपके जमाने में क्या हुआ? मैं कई एक बजट स्पीच लेकर आ रहा हूं। मैंने सोचा कि 10-10 साल के अंतराल पर जो इस देश में बजट स्पीच हुए हैं उनको जरा अध्ययन किया जाए। 1954 में मैं सीडी देशमुख साहब का बजट स्पीच लेकर आया। उन्होंने कहा कि हमने एक एग्रीमेंट किया है वर्ल्ड के साथ कि 86.7% से ज्यादा जो है इनकम टैक्स हम लोगों के ऊपर नहीं दे सकते हैं, इसलिए 40,000 से ऊपर, यह सबको जानने वाली बात है कि 40,000 से ऊपर जिन लोगों को टैक्स लगता है उनको हम 92.5% टैक्स ब्रैकेट में रखते हैं। इस देश में 92.5% टैक्स था 1954 में, 92.5%। 1964 का बजट स्पीच लेकर आ रहा हूं मोरारजी भाई का। 1964 इनकम टैक्स कितना था? 50,000 से ऊपर लोगों को लगभग 94%। और फिर मैं 1973 का श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बजट स्पीच लेकर आया हूं 1973 में। वो कह रही है कि 94% से कम में काम नहीं चलेगा। और फिर मैं बीपी सिंह साहब का बजट स्पीच लेकर आया हूं राजीव गांधी जी के समय 86 में, 62.7%। आपने क्या किया गरीबों के साथ, मिडिल क्लास के साथ? हम क्या कर रहे हैं? हमने 13 लाख रुपया जो सैलरीड क्लास का है उसको हमने कहा कि आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और यदि एक परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोग कमाते हैं, यदि हस्बैंड है, वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो लगभग आप समझिए कि 50 लाख से ऊपर किसी को टैक्स नहीं लगेगा। और कौन ऐसा परिवार है इस देश में, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए 2%, 3% को, जिसके यहां की 50 लाख से ज्यादा इनकम है? आप क्या बात करेंगे? दूसरा मैं लेकर आया हूं कॉर्पोरेट। अभी बहुत बड़ी बात कही कॉर्पोरेट। इस देश को जानने वाली बात है कुछ चीजें। 1966 में रिलायंस, हमारे सरकार को बहुत कहा जाता है कि अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है। जब अपोजिशन में, जब कांग्रेस इधर थी, जब कांग्रेस थी, तो हम भी कहते थे कि ये टाटा की सरकार है, बिरला की सरकार है। इस देश में जानने वाली बात है कि 1966 में रिलायंस इंडस्ट्री आई, 66 में, और 98 तक मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं मिस्टर कार्ति चिदम्बरम, 98 तक रिलायंस इंडस्ट्री 1 रुपया टैक्स नहीं देती थी इस देश में। ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। 87 में उनको परेशान करने के लिए माननीय राजीव गांधी जी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट लगाया 1987 में, और 88 में उसका इंप्लीमेंटेशन रोक दिया। 88 में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लाया राजीव गांधी जी ने, 88 में। इस देश को जानने वाली बात है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी को रोकने के लिए उसका रूल जो है माननीय अध्यक्ष महोदया, उसका रूल जो है 2011 तक नहीं बना, 2011 तक नहीं बना।
और आप जिस टैक्स की बात कर रहे थे शशि थरूर साहब, ये बात फैक्ट है कि 48 लाख। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं बैठ जाता हूं, बोलिए। बोलिए कौन सा पॉइंट है, मैं पॉइंट बताइए ना, ये पॉइंट बताएंगे ना। नंबर टू मैडम 352 स्वर्गीय प्रधानमंत्री पर ये जो आरोप लगा रहे हैं कि एक विशेष कंपनी के मद्देनजर रखते हुए एक सरकारी कानून लाया गया है, ये पूरी तरीके से उनके छवि को धूमिल करने का। माननीय लगा रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं निशिकांत जी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। फैक्चुअल पोजीशन देना कोई आरोप नहीं होता, फैक्चुअल पोजीशन देना कोई आरोप नहीं होता है। मैं देख प्लीज माननीय सदस्य, मैंने अगर ऐसा कुछ होगा तो देख मैंने सभापति महोदया कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने कहा कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और सम्मान करना भी चाहिए, इस देश के प्रधानमंत्री रहे। मैंने कहा कि उन्होंने 1987 में मैट लाया, उसका इंप्लीमेंटेशन रोक दिया। मैंने ये कहा कि 88 में वो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लेके आए और जो कोई भी यहां कानून बनता है उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलता है, रूल्स निकलता है। 2011 तक ये रूल्स नहीं बना। मैंने तो केवल इतनी बात कही कि जब आप कोई एक्ट बनाते हो तो उसका रूल बनाओगे ना, उसको इंप्लीमेंट करोगे ना। उन्होंने 48 लाख करोड़ की बात की है मैडम। ये जो टैक्स है ये केवल दुनिया को दिखाने के लिए आप टैक्स पे रेट करते हो और किसी के ऊपर, मैं आपको बताऊं कि उसमें से 48 लाख करोड़ का जो टैक्स बाकी उसमें 43 करोड़ रुपया, 43 लाख करोड़ रुपया जो नोशनल है, जो आपने कहा कि यदि आ जाता तो फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता। मिस्टर थरूर, मैं आपको बताऊं उसमें एक जो बिल है लगभग 1,10,000 करोड़ का हसन अली का। हसन अली कौन था? काशीनाथ टपोरिया कौन था? एक घोड़ा का व्यापार करने वाला आदमी जिसने कि 2007 तक कोई इनकम टैक्स नहीं दिया। साथ में आप उसके यहां रेट करते हो पूना का और उसके ऊपर जो है चार्ज लगाते हो और वो टैक्स आप कहते हो कि कभी 74 लाख करोड़ रुपया देना है, कभी कहते हो कि नहीं 1,10,000 करोड़ रुपया देना है। इस तरह से ये जितने टैक्स हैं वो 80 के पहले के हैं। और मैं आपको बताऊं कि उसमें एक टैक्स जो है, अब मैं आपको एक पढ़ के बताता हूं, मैं नहीं बोलना चाहता था, अब आप पढ़ो सुनो। उसमें से एक टैक्स जो है बिन चड्ढा का भी, बोफोर्स का है। मैं आपको पढ़ देता हूं, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया 25 फरवरी 2011 और क्वेश्चन पूछा, अनस्टार्ट क्वेश्चन है। उसमें यह पूछा गया कि वेदर द बोफोर्स केस इज आल्सो लाइंग इन द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, if so the details thereof and time since when the case is pending along with। और उसके बाद पूछा गया कि whether the Central Bureau of Investigation has not taken this case seriously। यह क्वेश्चन पूछा गया और उसका जवाब आप ही की सरकार, आपने कहा कि हां यह बात सही है कि 87, 88 से लेकर 93, 94 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विन चड्ढा के ऊपर, हिंदुजाज के ऊपर, एसके भटनागर के ऊपर, ये बड़ा केस है और इसके ऊपर जो है इनकम टैक्स ने बताया कि उन्होंने इलीगल तरीके से बोफोर्स के जो किकबैक आए थे उसमें से पैसे नहीं दिए, वो आज भी पेंडिंग। और दूसरा आपने उसी के आगे कहा कि हम सब कुछ जानते हैं कि इसमें बोफोर्स के पैसे आए, बिन चड्ढा को पैसे गए, बिन चड्ढा का ये आपका उत्तर है, इसीलिए मैं इसको कार्ती जी में आप बताएं तो मैं इसको प्लेस ही कर दूंगा क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन वो आप कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी जितने एक्यूज थे बोफोर्स के इंक्लूडिंग कोथरोची, हमने सबको क्लीन चिट देके बाहर कर दिया सीबीआई में। ये आपका जवाब। आप हमारे ऊपर चार्ज लगा रहे हो कि 48 लाख करोड़ रुपया कहां गया, 43 लाख करोड़ रुपया कहां गया?
और इसी तरह के नोशनल टैक्स लगाकर या नोशनल बातें बताकर आप मुझे परेशान करना चाहते हो, इस सरकार को परेशान करना चाहते हो, सरकार के नीतियों को परेशान करना चाहते हो, और इस देश को जो कि हम वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो है आप परेशान कर रहे हैं। जी जी, ये भर्तरी माता साहब कुछ बोल। चढ़ा के प्रॉपर्टी को नीलाम करके पैसा ट्रेजरी को लाया, इसके आगे भी कहानी है, बताइए। कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सभापति महोदय, सभापति महोदय प्लीज बैठिए। सभापति महोदय, भर्तरी माताब साहब इस सदन के सबसे सीनियर एमपी है। संजोग से हम लोगों को जो है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर उन्होंने शपथ भी दिलाया। भर्तरी माताब साहब एक कमेटी के चेयरमैन थे, पीएससी सब कमेटी के। उसमें मैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र जो इस बार चुनाव नहीं लड़े, शिव कुमार उदासी साहब, हम तीनों उनको सहयोग कर रहे थे। और ये बातें जब हमने कही तो हमने सीबीआई और इनकम टैक्स दोनों को चेयरमैन के नाते जो है मिस्टर महताब ने बुलाया, और मिस्टर महताब ने ये इंसिस्ट किया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सब कमेटी के चेयरमैन के तौर पर कि बोफोर्स का ये केस है, जब ये प्रूफ कर दिया है इनकम टैक्स ने कि किकबैक लिए गए हैं और बिन चड्ढा ने उस किकबैक से प्रॉपर्टी खरीदी है, तो जो उसके वारिस बचे हुए हैं, बिन चड्ढा की डेथ हो गई थी, उसके जो वारिस बचे हैं उसको आप नीलाम करिए और पैसे लाइए। और इसके लिए मुझे लगता है कि भर्तरी महताब साहब की कमेटी को धन्यवाद देना चाहिए इस देश को कि हमने उस पैसे को जो है ट्रेजरी में जमा करवाया। अब मैं आऊंगा सभापति महोदय, ये सीएजी की कुछ रिपोर्ट लेकर मैं आया हूं। इस देश में बहुत बातें चलती हैं कि कॉरपोरेट को हम मदद करते हैं, आम लोगों को मदद नहीं करते हैं। एक रिपोर्ट जो है, ये रिसिप्ट ऑफ बजट 13-14 जिस साल की हम लोग सरकार से आए, ये भारत सरकार का रिपोर्ट है। भारत सरकार जो क्या होता था कि जब मैं पहली बार एमपी बनकर आया, यहां तो हमसे बहुत सीनियर लोग हैं, एक चैप्टर जो है, एक बुक हम लोगों को मिलता था रेवेन्यू फॉरगॉन का। कॉर्पोरेट को कैसे फायदा पहुंचाया जाता था ये मैं आपको बताऊं। और ये सीएजी की रिपोर्ट जो मैं कह रहा हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट जो लेके आया हूं मैं, वो ये दिखा रहा है कि इस देश में कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 33%, जो 2004 से लेकर 14 तक यूपीए चलाती रही, 4 से 14 तक 33%। सेस की बात की अभी मिस्टर थरूर ने, तो सेस को यदि मान लेंगे तो टोटल वो टैक्स बढ़ता था 38.9 के आसपास। सीएजी कह रहा है कि 10 साल में किसी भी कॉर्पोरेट ने उसने 400, इस देश के 400, ये 13-14 की रिपोर्ट है, 400 बड़े इंडस्ट्रियल हाउस का जो है नाम दिया, उसका जो टैक्स था वो केवल 22.3% था। 22% से ज्यादा कॉर्पोरेट ने कभी इस देश में टैक्स ही नहीं दिया 2014 तक। हमने क्या टैक्स दिया? हमसे आपने कभी 40% वसूला, कभी 30% वसूला, कभी 25% वसूला। 3 लाख 4 लाख के बाद जो है, जो गरीब आदमी है वो भी टैक्स देना शुरू कर दिया। कभी अपने गिरेबा में झांके हैं। और ये आपका रिसिप्ट है, रेवेन्यू फॉरगॉन का एक पेपर आता था, हम सभी ने इसको पढ़ा। जब बजट पेपर तो उस वक्त आता था, अब तो डिजिटल कर दिया है ओम बिरला साहब ने। उसने ये कहा अंतिम में 13-14 में जब ये लोग जा रहे थे, 5 लाख करोड़ रेवेन्यू फॉरगॉन सारे बिजनेसमैन को किया। This is here. ये मैं 13-14 का जो है पूरा वो रेवेन्यू फॉरगॉन का ये रिपोर्ट लेकर आया। मैं ये कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदया, इन लोगों को
इस बजट में कुछ चीजें दिखाई नहीं देती। मैं केवल तो आपको आईना दिखा रहा हूं, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो संजय की तरह सारी बातें जो है बता रहा हूं। यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं सुनना चाहते हैं मैं क्या करूं। अब रोजगार की बात कर रहे हैं, अब रोजगार की बात कर रहे हैं कि इस बजट में रोजगार के लिए क्या क्या है। आप लोग सबसे ज्यादा चिंता जो है उसी पर कर रहे हैं। मैं रोजगार पर याद, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सर्विस सेंटर, इसके ऊपर हमने जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उसके टैक्स के कंसेशन के बारे में, जिससे कि नए नए स्टार्टअप्स खड़े हों, नए लोग आए, नई इक्विटी आए, नए डेवलपमेंट हो। कभी आपने इस बजट को पढ़ा है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग दूसरा ऐसा सेक्टर है जिस पर कि यह सरकार इस बजट में, इस फाइनेंस बिल में बहुत कुछ लेकर आई है। और फिर मैं पूरे सदन का और पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत बातें होती हैं कि यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, हम लोग फेल हो रहे हैं, चाइना आगे बढ़ रहा है, ताइवान आगे बढ़ रहा है। चिप्स का सवाल हो, सेमीकंडक्टर का सवाल हो, टेलीफोन का सवाल हो, मोबाइल का सवाल हो। कार्ति जी, आपके लिए 96 में आपके पिताजी 97 में, जब वो देवगौड़ा साहब और इंद्र कुमार गुजराल साहब के साथ मंत्री थे, आईटीए, इंटरनेशनल टेलीफोन एग्रीमेंट, टेलीकॉम एग्रीमेंट, ITA 1, वो साइन कर, और पूरी दुनिया में 193 194 कंट्री है, अब तो 195 हो गया है। 195 कंट्री में केवल 17 कंट्री सिग्नेटरी थे। बाद में वो बढ़कर 29, इवन चाइना भी उसका सिग्नेटरी नहीं था। चाइना भी उस एग्रीमेंट का पार्ट 2003 में हुआ। और हमने क्या एग्रीमेंट कर लिया? हमने एग्रीमेंट कर लिया कि 2004 तक ये जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टॉयज हैं, हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर हैं, कहीं से भी लेके आ जाइए, हम जीरो ड्यूटी लेंगे। पूरी कस्टम ड्यूटी एबॉलिश कर दी, ये एग्रीमेंट साइन कर लिया। मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूं, मिस्टर थरूर इसके पहले उस कमेटी के चेयरमैन थे, प्रताप राज यादव थे। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार सरकार को कह रहे हैं। मैं शशि थरूर साहब का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी इस बात के लिए लगातार कहा कि ITA 1 से भारत को कैसे निकलना है। हम चाहकर भी ITA 1 से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन यही इस देश के प्रधानमंत्री थे और निर्मला सीतारामन जी थी कि 2015 से पूरी दुनिया ITA 2 को साइन करने के लिए कह रही है, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। और जब आप रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो? आपने जब जीरो ड्यूटी कस्टम, 0% कस्टम ड्यूटी साइन कर लिया कि उसमें एक्साइज नहीं लगेगा, उसमें कस्टम नहीं लगेगा, इसके बाद क्या हो गया? पूरी की पूरी, इवन जो गणेश जी की प्रतिमा है या जो हम दिवाली में चुलबुलिया बल्ब लगाते हैं, वो भी चाइना से आ रहा है। ये सब आपके देन है। और आप मुझे कहोगे कि हम क्यों नहीं कंपीट कर पा रहे, हम क्यों नहीं कंपीट कर पा रहे। लेकिन इस बजट में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया। दूसरा, इस देश में दो चीजें हैं, इस देश में दो चीजें। हाँ लीजिए, समय लीजिए। Madam Mike. Madam Pledam, in this house, about the return of the corporate loan, including the corporate loan, 18 lakhs crores loan has been written off by this government. I will build a split up. That is the, you are talking about the UPA period. 18 lakh crores. Then the question, then specifically member asked the question whether how much the corporate loan was been written off. Then there is no data within us. The reply from the minister. What a shame is that, madam. I will show them. सभापति महोदया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनमा जोड़ा। हमने रेवेन्यू फॉरगॉन की बात की और वो NPA की बात कर रहे हैं।
ये Honorable Member of Parliament, but going on the written off makes me feel a bit worried, because n number of times in this house we have said what is written off as opposed to waive off. Written off is not as if it's a giveaway. We are following up with cases. 1 minute. I've heard you. I've heard you. You should hear me. Madam, I think you should listen. KC Venugopal ji, you're a senior member. I heard you. I'm trying to say I'll answer, but I'll also want to explain it much before my turn comes to answer. Kindly hear. Hear. Just patiently hear. So, madam, waive off and written off is something which is going to continue forever in this house, despite any number of answers. But I will certainly answer all over again. First of all, when responding in the name of waive off and written off, when Honorable Member Nishikant Dubey is talking about revenue foregone related matter, they're not counterpoints. That's one thing. This is another. On this, I will certainly give my answer. निशिकांत जी, माननीय यहाँ टैक्स की बात हो रही है, बैंकिंग की बात नहीं हो रही है। मैं फाइनेंस बिल पर बात कर रहा हूं, और इस देश के बड़े सीनियर नेता हैं वेणुगोपाल साहब, मैं बहुत आदर करता हूं, हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी चेयरमैन हैं। रिटर्न ऑफ, बैंक का रिटर्न ऑफ और रेवेन्यू फॉरगॉन, ये दोनों बड़े डिफरेंस है। इसके बारे में डिफरेंस, और उसके बारे में जब वो जवाब देंगी तो जवाब देंगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कई एक चीजें उसमें फोनो बैंकिंग की है, फोन पर जो बैंकिंग होती थी वो माननीय मोदी जी ने 2014 में रोक दिया है, उसके कारण ये हुआ है। लेकिन मैं आप वो बताएंगे, जवाब देंगे। दो सभापति महोदया, जब कॉर्पोरेट टैक्स घट गया, अब आप समझिए, मुझे लगता है कि यहाँ प्रियंका जी बैठी हुई हैं, राहुल जी और प्रियंका जी को, इन लोगों को क्लास दिलवाना चाहिए फाइनेंस के बारे में। गौरव गोगोई साहब, आपको अब आप समझिए, यदि टैक्स घट गया और टैक्स हमने यदि ऑफिशियली घटा दिया तो उसमें रेवेन्यू फॉरगॉन कहां से होगा? लेकिन मैं आपको बताऊं दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया को दो चीजें बहुत ही प्रभावित करने वाली हैं फ्यूचर में, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही एक्टिव है। अभी आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कमेटी बनी है वर्ल्ड की, उसके वो को चेयर कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी वर्ल्ड की मीटिंग यहां भी होने वाली है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो युवाओं को आकर्षित करती हैं, लेकिन देश के लिए खतरनाक है। एक है क्रिप्टो करेंसी, और जब आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब थे, उन्होंने कई एक बार कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ कोर्ट भी बहुत एक्टिव रहती है, जिस बात पर टांग नहीं अड़ाना है उस बात पर भी टांग अड़ाती है। क्रिप्टो करेंसी ने जो है, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज चलते रहेंगे, चीजें करती रहेंगी। आरबीआई के गवर्नर के उस स्टेटमेंट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया। लेकिन उसमें से जो ब्लैक मनी बाहर जा रही थी, या जो इलीगल टेंडर का, लीगल टेंडर नहीं था, इलीगल नहीं कह सकते, लीगल टेंडर नहीं था, लेकिन उसका जो उपयोग हो रहा था, उसके लिए भी इस बजट में और इस बजट के पहले भी, कि क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एक पोर्शन जो है कटना चाहिए, उस पर टैक्स लगना चाहिए। यह भी इस बजट में प्रावधान है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का जो है बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसको लिया। दूसरा, और ये देश में उस दिन पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो रहा था, ऑनलाइन गेमिंग। दो चीजें हैं, ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग, और इसमें युवा परेशान है। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां की युवा इससे आत्महत्या करने को मजबूर नहीं है, या मां बाप की जो गाढ़ी कमाई है वो निकाल कर जो है उसको बेटिंग में नहीं लगा रहा है। इसमें भी राज्य सरकार का विषय था, केंद्र ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटिंग अलग चीज है, गेमिंग अलग चीज है, और गेमिंग जो है वो स्किल,
और इसके आधार पर भारत सरकार मजबूर है, बहुत कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अभी जीएसटी की बात कहे कि कहीं दो स्लैब है, हमारे यहां जो है 3-4 स्लैब। उस स्लैब के पीछे आपने रीजन समझा कि क्या स्लैब है? यदि गरीबों को हमको खाना पहुंचाना है, किसानों को मदद करना है, तो क्या 0% ड्यूटी नहीं होनी चाहिए? लेकिन इस गेमिंग पर भारत सरकार ने क्या किया? पूरी दुनिया जो है पूरे परेशान है इसके कारण से। कई एक लोगों को लगता है कि हमने क्या कर दिया। 28% जीएसटी इस गेमिंग पर लगता है। इसके लिए आप भारत सरकार को नहीं कहेंगे, और इस कारण से जो गेमिंग की एक बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट हो रही थी इस देश में, वो तहस नहस हो रही है। और यदि इसी तरह चलता रहा, आप तो कहेंगे ही, आपके यहां तो बड़ा एक है आदमी, दयानिधि साहब, सेंट डियागो सेंट मार्टिन, क्या पता नहीं क्या नाम है उसका, यही काम है, एक कभी 1 लाइन लॉटरी देखता है, 1 डिजिट लॉटरी देखता है, और उसने जो है उसने किसको किसको चंदा दिया। इस चंदा को जो है उसने चंदा बंगाल में जो है ममता बनर्जी जी की गवर्नमेंट को दिया और आपको दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। यही है सेंट मार्टिन, यही है, उसी का फंड लेके आप यही बात करोगे। मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है इसके बाद इस सभापति महोदया, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं फिर ये पूरे बजट का सब स्पीच जब पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि जब से ये भारत स्वतंत्र हुआ, मार्केट में यदि किसी के साथ उसका सबसे अच्छा व्यापार या सबसे ज्यादा उसने बिजनेस किया, तो अमेरिका के साथ किया। और शुरू से मतलब 50 का बजट स्पीच देखिए, 52 का बजट स्पीच देखिए, 54 का देखिए, 64 का देखिए, 73 का देखिए। आज जो स्थिति है कि लग रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद हमारा जो है व्यापार कैसे हो और हम अपने टैरिफ को एडजस्ट कैसे करेंगे। और यही कारण है कि इस बजट में हमने यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ, नए मार्केट्स के साथ, यूएस के साथ, किस तरह के, चाइना के साथ यदि व्यापार कम करना हो, बंद करना हो, वो भी भारत सरकार को करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। ठीक है ना? और उसके लिए उसका भी मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं। मुझे पता था कि आप चाइना चाइना चिल्लाओगे। 2014 में हमारा और चाइना का जो ट्रेड बैलेंस था ना, वो 22% ऊपर था। और जब कोरोना हुआ ना 21-22-23, तो वो -9.67% था। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है गौरव जी, समझने से होता है, समझदारी से होता है, जानकारी से होता है। हम मजदूरी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। आपको पता है विद्यार्थी के 5 गुण क्या होते हैं? काक चेष्टा, बको ध्यानं, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। जब ये 5 चीज आप में होगा ना, तो आप सीखोगे। यदि 5 चीज नहीं होगा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए, स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह जो है नींद होनी चाहिए, अल्पाहारी, कम खाना चाहिए, और गृह त्यागी, घर छोड़ के, मतलब पूरा दिन रात जो है बिजनेस, मतलब अपने क्षेत्र के जनता के बीच में लगोगे, तो उसके बाद समझ पाओगे। यदि ये 5 गुण नहीं होगा तो नहीं सीख पाओगे आप। सभापति महोदया, तो मैं आपको बताऊं कि इस बजट में जो है कि किस तरह से टैरिफ हम घटाएं जिसके कारण कि हमारा व्यापार बढ़े। करंट अकाउंट डेफिसिट, मिस्टर थरूर, आपकी जानकारी के लिए कि इस देश में करंट अकाउंट डेफिसिट केवल एक बार ऐसा था जो कि कम था। हमने ज्यादा जो है एक्सपोर्ट किया था, इंपोर्ट कम हुआ था। वो माननीय वाजपेयी जी की सरकार थी। पूरे इतने भारत के इतने वर्षों के इतिहास, वो केवल एक बार 2004 में था।
और उसी को आप थोड़ा सा इंतजार करिए, 2027 के बाद जब हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे तो थोड़ा सा इंतजार करिए, हम लगातार जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कम होगा। इसके लिए आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस देश में टीबी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, आयुष्मान भारत का एक बड़ा प्रोग्राम भारत सरकार कर रही है, लेकिन आज भी जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने के बाद भी भारत में विदेशों से अच्छे मेडिसिन की आयात की आवश्यकता पड़ती और गरीबों को उसमें से कितना कम पैसा देना पड़े, नहीं कि बराबर पैसा देना पड़े, उसके लिए भी भारत सरकार ने इस बजट में 36 ऐसे मेडिसिन हैं जो जीवन रक्षक मेडिसिन है, उस पर जो है टैरिफ हमने कम किया है, जिसके कारण कि आपको माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देनी चाहिए। किसान के लिए मछली पालन, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं, किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। किसानों की आय की दुगनी में आप पोल्ट्री के लिए, आप फिशरीज के लिए, इसको आप मानोगे कि नहीं मानोगे? दूध के लिए मानोगे कि नहीं मानोगे? लेकिन ऐसे तो नहीं होगा। तो मछली पालन के लिए जिस इक्विपमेंट की आवश्यकता है, जिन चीजों की आवश्यकता है, जिसमें कि हम वर्ल्ड में जो है नंबर 1 एक्सपोर्टर बन पाए मछली पालन के लिए, उसका भी इस बजट में जो है एक बड़ा जिक्र है कि हमने उसकी टैरिफ ड्यूटी को जो है कम किया। अभी लौट के आई हैं सुनीता विलियम्स, हम भी चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, मंगल पर जाना चाहते हैं, हमारा एक प्लान है। अभी चंद्रमा पर नहीं गए क्या? आप फिर देखिए। अरे इस देश के वैज्ञानिक के लिए तो कम से कम हल्ला गुल्ला नहीं करो। हम मनुष्य को लेकर चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, मंगल पर जाना चाहते हैं। उसके लिए स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में हमने जो है टैरिफ को घटाया है। इतना भी नहीं सुनना चाहते हो? बांग्लादेश में आज का ही न्यूज है कि 140 इंडस्ट्री उसकी टेक्सटाइल में जो है बंद होगी। हमारे पास मौका है। बांग्लादेश के जो हालात, पूरे यूरोप के जो हालात हैं, लेबर के जो फोर्सेस हैं, हमारे जो स्किल्ड लेबर हैं, बुनकर हैं, जो हमारा काम करते हैं, चाहे हमारे गोड्डा का सिल्क हो, चाहे भागलपुर का सिल्क हो, चाहे बनारस का सिल्क हो, चाहे चंदेरी की साड़ी हो, चाहे कश्मीर का हो, वो सब जो है, चंदेरी मध्य प्रदेश में है, उन सबों के लिए हमने जो है इस तरह का स्ट्रीमलाइन किया है टैरिफ को, जिसके कारण कि ये हैंडलूम सेक्टर बढ़े, बुनकर बढ़े। और बुनकर में आप लोग को मुसलमानों का भी वोट नहीं चाहिए, ज्यादातर तो बुनकर मुसलमान ही है, काहे चिल्लाते हो भाई? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसमें माननीय मोदी जी भी चल रहे हैं और हम सब ये काम कर रहे हैं, तो ये भी समझने को तैयार नहीं हो आप। इसके बाद जीएसटी में, बस 4-5 मिनट में मैं खत्म करूंगा। जीएसटी में अभी कहा गया कि जीएसटी रैशनल होना चाहिए। मुझे लगा, शशि थरूर साहब का सम्मान करता हूं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नई किताब लिख रहे होंगे तो फाइनेंस बिल थोड़ा कम पड़ पाए। इसमें मैं आपको बताऊं कि पूरे फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट इन सेक्शन 2 ऑफ सीजीसी एक्ट 2017, इसमें हमने क्या रैशनल करने के लिए किया है। दूसरा अमेंडमेंट हमने किया है सेक्शन 12 और 13 में हमने अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 17 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017, चूंकि बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, इसलिए मुझे लगा कि पूरे हाउस को बता दूं, क्योंकि जीएसटी पर सभी लोग चर्चा करते हुए इसकी बात करेंगे। सेक्शन 20 में हमने अमेंड किया है, सेक्शन 34 में हमने अमेंड किया है, सेक्शन 38 में हमने अमेंड किया है, सेक्शन 39 में हमने अमेंड किया है, सेक्शन 107, 112 में हमने किया है, सेक्शन 122 में किया है, सेक्शन 148 में किया है, सेक्शन शेड्यूल 3 में किया है। इतने अमेंडमेंट करने के बाद भी यदि आपको लगता है कि हम लोगों ने इस पर काम नहीं किया, तो मैं आपको क्या कर सकता हूं? मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। जिस दिन से चला हूं
मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इस नए ऐतिहासिक फाइनेंस बिल के लिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय वित्त मंत्री का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, सबके लिए एक बड़ा प्रयास किया है। और हम 2027 तक इस दुनिया की तीसरी इकोनॉमी और 2034 से लेकर 40 के बीच में नंबर 2 और नंबर 1 की इकोनॉमी बनेंगे। इसी विश्वास और इसी विकास के साथ जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य श्री नीरज मौर्य जी। धन्यवाद सभापति महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज वित्त विधेयक 2025 पे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और मैं आभार प्रकट करता हूं आंवला की महान जनता का, जिसने हमको यहां भेजा। मान्यवर, जब से ये भाजपा की सरकार आई है, लगातार एक नारे पे बहुत जोर दिया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास। मान्यवर, सबका साथ सबका विकास अगर करना होता तो इस बजट में पूरे देश के अंदर जो 543 लोकसभाएं हैं, उनको ध्यान में रख के एक ऐसा विकास का एजेंडा आता जिससे इस देश का गरीब कमजोर भी महसूस करता कि हमारा विकास होने जा रहा है। लेकिन ये सबका साथ सबका विकास तो केवल जुमला साबित हो रहा है। और हमारी वित्त मंत्री महोदया के बारे में मैं कहूंगा कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और नुकसान। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पीडीए के लोगों को, जो पिछड़े दलित हैं, उनको रुलाना बंद करें। उनके लिए ऐसे दरवाजे खोलें कि उनका विकास हो। बजट सब बनाते समय अगर ऐसा ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर इस देश को विकसित भारत कैसे बनाएंगे आप? मान्यवर, हमारे देश के अंदर टैक्स का बहुत बड़ा बोझ है। जब देखा जाए तो हम सभी भारतवासी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर भुगतान करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने अगर एक साल में 15 लाख रुपए की कमाई की तो उस आमदनी पे इनकम टैक्स दिया। टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा, वही पैसा हम साल भर लोग खर्च करते हैं, और उसके बाद हर जगह हमको जीएसटी देनी पड़ती है, रोड टैक्स देना पड़ता है। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, जब पंजीकरण कराते हैं तब भी टैक्स देना पड़ता है, और जब हम रोड पे चलते हैं तब भी हमको टैक्स देना पड़ता है। मान्यवर, इस तरह से अगर देखा जाए तो आमदनी का लगभग 50% तो पैसा टैक्स में जा रहा है। इस टैक्स को ठीक करने की आवश्यकता है। इतना भारी टैक्स देकर भी जो हमारे देश और खासकर हमारे जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, अस्पतालों का बुरा हाल है। इनकम टैक्स, जीएसटी दे रहे हैं, कम से कम अच्छी शिक्षा तो करा दीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था तो ठीक करा दीजिए। और मान्यवर, सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है और प्राइवेट स्कूलों में किताब के नाम पे कितना बड़ा करप्शन हो रहा है। एक सर्वे रिपोर्ट आई है कि लगभग प्राइवेट स्कूलों में 55,000 करोड़ का किताबों के बिक्री पे घोटाला हो रहा है हर साल। मान्यवर, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एनसीईआरटी की जो बुक है, जो मात्र 65 रुपए की आती है, वो प्राइवेट वाले 700 में बेच रहे हैं। इस ओर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, हमारे यहाँ पे पहले जीआईसी होते थे, उन जीआईसी में लोग पढ़ने के लिए लाइन लगाते थे। आज उनका बुरा हाल हो गया, कोई जाना नहीं चाहता। सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल है कि लोगों को सही इलाज नहीं मिलता। लोग प्राइवेट में जाने पे मजबूर हैं, वहां पे 1 के 4 देने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये मांग भी करता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक एम्स की स्थापना की जाए।
एक एम्स बनाया जाए आंवला बरेली में, जिससे कि वहां के लोगों को अच्छा इलाज भी मिल सके। मैं सरकार से चाहूंगा कि एक समान शिक्षा की व्यवस्था हो, एक समान चिकित्सा की व्यवस्था हो, और दोनों में चाहे अमीर हो गरीब हो फर्क ना होने पाए, क्योंकि भारत के विकास का रास्ता गांव से जाता है, प्राइमरी स्कूलों से जाता है। और खास करके पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, इनको कैसे अच्छी शिक्षा मिले, कैसे इनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, इस बात को मैं बल देता हूं। आज के इस दौर में जहां पे आईटी कंपनियां अपने एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर रही हैं, छटनी कर रही हैं, हमारे युवा बहुत परेशान हैं। और आज जो बहुत उधर तेज तेज से आवाज करके अभी बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के एक भाजपा के विधायक हैं गाजियाबाद के, उनकी बातों पे सरकार को गौर करना चाहिए। उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है, उस पर गौर करना चाहिए। ये नंद किशोर जी ने कहा है कि किस तरह से गाय कट रही है, किस तरह से भ्रष्टाचार है, और मान्यवर हमारे रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है। मैं तो सलाह दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पुराने भाषणों को, पुराने बयानों पे भी अध्ययन करें कि रुपया कैसे आगे बढ़ेगा। मान्यवर इनकम टैक्स में अभी 12 लाख तक छूट देके बहुत यहां से वाहवाही की गई, 12 लाख तक की छूट दी गई, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जो बहुत सारी ऐसी कमियां हैं कि टीडीएस जमा करने का जो नियम बनाया गया है, कुछ भुगतान जैसे वेतन, ब्याज, कमीशन आदि का भुगतान करते समय भुगतानकर्ता को टीडीएस काटना होता है। यह टीडीएस अगले माह की 7 तारीख तक जमा करना होता है। इसके उपरांत टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है। यदि देय तिथि तक भुगतान न किया जाए तो धारा 276 बी के तहत 7 साल की सजा का प्रावधान है। फाइनेंस बिल नंबर 2 जो 2025 में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि अब देरी से कर जमा करने पर सजा का प्रावधान नहीं होगा, ये 24 में कहा था सारी, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। सजा में छूट अधिकतम 85 दिन की देरी भुगतान पर दी गई है। उदाहरण के लिए जून माह में का टीडीएस 7 जुलाई तक जमा करना होता है और 31 जुलाई तक हमें टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है। अब इस केस को करके कर को केवल 24 दिनों का लाभ दिया गया है। इस प्रकार अप्रैल का टीडीएस 7 मई के स्थान पे 31 जुलाई तक जमा किया जाता है तो सजा नहीं लगेगी। इसी तरह से टीसीएस के प्रावधान की बात करें तो सेक्शन 276 बीबी में अमेंडमेंट किया गया और इसमें भी उपरोक्त की तरह प्रभाव डाला गया है। जबकि यहां भी अगर हम जून माह के टीसीएस की बात करें तो 7 जुलाई तक वो जमा करना होता है तथा 15 जुलाई तक टीसीएस की रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होती है। अब इस केस में हमको सिर्फ 8 दिन का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब 8 दिनों की छूट को कोई भी वैधीकरण कैसे बोल सकता है? एक और करदाता टैक्स कलेक्शन के सरकार के उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, इसके लिए टीडीएस, टीसीएस कर रहा है, उसको जमा कर रहा है, क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल कर रहा है। इसकी और छोटी सी कुछ दिनों की भूल के लिए उसको जेल की सजा का प्रावधान है। कई बार ऐसा होता है कि टीडीएस के प्रावधान की जानकारी न होने के कारण टीडीएस, टीसीएस वास्तव में बाद में काटा जाता है, किंतु इसकी एंट्री अर्लियर डेट में की जाती है। कई बार ऑडिट के दौरान भी गत वर्ष के टीडीएस, टीसीएस की कमी बताई जाती है। ऐसी स्थिति में टीडीएस, टीसीएस जमा करने में देरी स्वाभाविक है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी मांग है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर तक यह टीडीएस, टीसीएस तथा देरी से जमा होने के कारण उस पर ब्याज करदाता द्वारा जमा कर दिया जाता है तो सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। मान्यवर वित्त मंत्री महोदया ने आयकर अधिनियम 1994 टी इंसर्ट करा है, जिसके तहत पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन, ब्याज, कमीशन या बोनस जैसे कोई राशि क्रेडिट करने पर 10% टीडीएस काटना होगा।
मान्यवर, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, थोड़ा कृपा करिए। अभी जो 12 लाख का ढिंढोरा पीटा गया, 12 लाख के तक की छूट देने की बात कही गई है। मैं मान्यवर उसमें वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो 12 लाख की आमदनी हो रही है और रिटर्न फाइल करने वाले को अगर 12,10,000 की इनकम हो गई, 12,50,000 की इनकम हो गई, तो जितना पैसा 12 लाख से प्लस कर रहा है वो सारा का सारा टैक्स में जा रहा है। इसलिए अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो जो कर चोरी के मामले आते हैं, मैनिपुलेट लोग करते हैं, वो करेंगे। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि जो टैरिफ बनाया गया है वो टैरिफ 12 लाख के ऊपर जो इनकम स्लैब है उसके अनुसार टैक्स लगाना जाना चाहिए, ना कि पिछली 12 लाख रुपए की इनकम पर भी टैक्स लगा दिया जाए। यह टैक्स पेयर के साथ भेदभाव है। अगर कर प्रणाली को अधिक निष्पक्ष समावेशी बनाना है तो कृषि पर कर लगाना और छूट को समायोजित करना आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे प्रदेश के किसान बहुत दुखी हैं। किसानों को ऋण के कारण तनाव में जीवन जीना पड़ता है, लोग आत्महत्या करते हैं। इसलिए सरकार से मांग करूंगा कि सरकार किसानों के ऋणों को माफ करे। और एक जो हमारे यहाँ जीएसटी का बहुत घालमेल है, जीएसटी के बारे में अभी हमारे मित्र उधर ऋषिकांत जी बोल रहे थे कि गेमिंग पे 28% जीएसटी है। हम सीमेंट पे भी 28% जीएसटी दे रहे हैं। सीमेंट पे भी 28% की जीएसटी है, जबकि सीमेंट हर आम आदमी इस्तेमाल करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो जीएसटी का व्यवस्था है उस व्यवस्था में बहुत सुधार की आवश्यकता है। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जीएसटी का जो मॉडल बनाया गया है उसको नीचे लाने की बात होनी चाहिए। मान्यवर, इस बजट में बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार व्यर्थ में बड़ी बड़ी बातें, योजनाएं बना रही है, कह रही है। अभी मान्यवर, अभी हमारा समय बस, चलिए 2-3 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ। माननीय सदस्य 12 मिनट हो चुके हैं, प्लीज कंप्लीट करिए। योजनाओं पे व्यय कर रही है, बेरोजगार नियोजकों के लिए भी कोई योजना अच्छी लानी चाहिए। मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं सरकार को कि बेरोजगारों के लिए शहर के बीचों बीच में कुछ दुकानें बनाएं ताकि उनको रोजगार मिले। और जो हमारे फेरी वाले दुकानदार हैं, प्रशिक्षित व्यापारी की तरह हैं वो, लेकिन पूंजी की कमी के कारण वो अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि धन की कोई कमी नहीं है, तो मैं समझता हूं इसके लिए भी सरकार ही जिम्मेदार है। और अभी एक हमारे देश का एक बहुत बड़ा बिजनेस घराना है बायोकॉन। बायोकॉन की जो सीएमडी हैं, उन्होंने बताया कि जीएसटी में हम लोग कैसा उलझे हैं कि कारोबारी का ध्यान सिर्फ इस बात पर ही रह रहा है कि जीएसटी समय पर दिया कि नहीं दिया, उसने रिटर्न समय पर जमा किया कि नहीं जमा किया। अन्य सभी सरकारी जो कायदे हैं इन पे ही दिमाग लगा रहता है, इससे व्यापार भी रुक रहा है। माननीय सदस्य मान्यवर, महुआ मोइत्रा जी, मान्यवर, बोलिए। आप शुरू करिए, शुरू करिए। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। Honorable Chairperson, sir, Honorable Chairperson, Madam, I've been allotted 18 minutes by my party, so I hope I'll be able to get the entire 18 minutes. I'm starting my stopwatch now. I rise today on behalf of the All India Trinamool Congress to dissect and oppose the Finance Bill 2526. Albert Einstein famously said that the hardest thing in the world is to understand income tax. Similarly, we find it very hard to understand why this government's taxation policy continues to widen the stark divide between the two Indias. A Kuber's India for the elite and the privileged, and another, Vishwakarma's India, for the masses who are bearing the brunt of this government's economic mismanagement. We have just finished the spectacle of the Mahakumbh,
with faith drawing millions to the holy Sangam at Prayag. The government is patting itself on its back for organizing the grandest spectacle that humankind has ever seen. It is a small concern that the same UP government who was unable to count the number of deaths in the Kumbh stampedes and give the country a number was magically able to insist that precisely 63 crore people had bathed in the river. Now, 63 crores is the entire adult population of India, which statistically implies that every single one of us sitting here has bathed in the Kumbh. I certainly haven't bathed in the Kumbh. Most of us sitting around me have not bathed in the Kumbh. So, but this mirage continues. This great mirage is continuing. Similarly, much like the great taxation mirage that this government has created. In December 24, in response to a parliamentary question, the Finance Ministry provided certain crucial statistics on taxpayers in this country. What did we learn? We learned that there are 8 crore people in this country who file taxes. But out of that, only 56 lakh people earn more than 15 lakhs per annum. These 56 lakh individuals, these are the engine of India's entrepreneurial and services economy. They are the only ones effectively paying direct income tax. Now, with the new exemption structure, those earning up to 12.5 lakhs annually will pay zero tax. Let's be clear, income tax is leviable only on 56 lakh people out of 140 crore population. Yet, we have a massive income tax department with supernormal snooping, police-like powers and unchecked discretion operating under the pretense of enforcement. What is the purpose of this? The 56 lakh people at least have a graded tax system, but for the rest of India, Vishwakarma's India, there is no relief. For the 139 crore people in Vishwakarma's India, GST is the great equalizer, but in the most regressive way possible. In financial year 23-24, the government of India collected 20 lakh crores in GST, which comes to about 15,000 rupees per person. So a billionaire and a daily wage earner both pay GST on food, on transport and essential commodities. The government has done nothing to alleviate this burden. There is no discussion on reducing indirect taxes on essential commodities, no roadmap to ensure fairer wealth distribution. All social sector spending has actually seen contractions. Let me give you a few examples. The finance bill mentions an health and education cess of 4% on income tax. No problem. Everyone's happy to pay this if it goes in the right way. You're taking our money, fine. The Kothari Commission in 1966 had said that 6% of India's GDP must be spent on education. Successive national education policies, including NEP 2020, insisted 6% of GDP must be spent on education. What are we spending today? Around 4.5%. What is China spending? 6.2%. This government's own national health policy of 2017 said that public health must account for 2.5% of GDP. What is this government spending today in the last budget? 1.94%. We must be the only country with a declining spending in health. The last few years, we have come down from 2% to 1.94%. So, Madam Finance Minister, wherever you are, I hope you're listening to me. Taxpayers don't mind paying extra cess for health and education, but at least spend it. Give the country what it deserves. Food subsidies have been slashed even as inflation has bitten into rural households. Between January and December of 2024, rural inflation was 5.4%, a full 100 basis points higher than urban inflation, mainly driven by higher food prices. Manrega is still underfunded. Last year's allocation was 86,000 crores. This year's allocation is also 86,000 crores, even though there's higher demand. If you pay West Bengal its 7,000 crores, which it is due, then you are even decrease the outlay even more. This time you guillotined the food and public distribution demand for grants. There was no discussion. Yet there are certain points that everyone needs to know. This country has a National Food Security Act in 2013, which mandates that 75% of urban households and 50% of urban households must have coverage. 75% of rural and urban must have coverage. Today, 81 crore people are getting 5 kg of free rations per month by this government. This is dependent on the 2011 census.
Now, the government on affidavit told the Supreme Court that we haven't had a census since 2011. We don't even know when the next census is going to be. So the government says, well, how are you going to revise the numbers? There are many poor people who are not getting rations. The new number is an extra 13 crore must be given rations. Government says, we don't know. We don't have a census. So Supreme Court says, what do you have? We have an unorganized migrant portal, the e-Shram portal. According to the e-Shram portal, 8 crore new people must be given rations. The government is steadfastly refusing to give this 8 crore people rations. Please note, these people are paying GST. They're paying GST. You're raising 20 lakh crores based on these people, yet you're not giving them 8 crores people rations per month according to the Food Security Act. Now, this kind of iniquity, I'm not comfortable with it. We certainly don't want this on our conscience. Certainly not. Now what we're talking about is that when you go to, you keep saying democracy, democracy, democracy. The Honorable Prime Minister is talking to podcasts all over the world, talking about freedom to criticize and democracy and democratic processes. We welcome it. But for a democracy to function, it is vital that its electoral processes be above board and above question. The legislative department in the law ministry is the nodal department which controls all spending for elections, for polls, for appointment for the poll members. The Honorable Finance Minister this year allocated 300 crores for voter ID cards, allocated 600 crores for election expenses, allocated 19 crores for EVM machines. But here we have an election commission that is refusing to give 100% VVPAT paper trails. It is refusing to make 17C forms public. It is refusing to give us new additions and deletions to the voter list. It is refusing to explain how duplicate epic cards are being issued in Murshidabad and in Gujarat. So spend taxpayers' money, but use it in the right way. We need some answers. Now let us examine the myth and the reality of this government's growth story. The Honorable Finance Minister claimed that India will grow at 6.5% next year. This forecast, by the way, is down from 9.2% predicted in 23-24. Just before he became RBI governor, former Revenue Secretary Sanjay Malhotra in December warned government tax officials that they should not kill the proverbial golden goose with their demands. Net foreign inflows fell to 1.2 billion between April and December, down from 7.8 billion. Private investment is weak. Manufacturing is stagnating at 17% of GDP. Rural unemployment is 9%. Fiscal deficit has come down to 4.4%. Agreed. But that's not happened because of revenue growth. That's happened because you've cut essential spending to the poor. This is economic mismanagement, not fiscal prudence. The government's obsession with corporate incentives has only favored big businessmen, where small businesses and laborers have got hurt. You slashed corporate income tax in 2019 from 30% to 22%. Has private investment picked up? No. So who have these tax cuts benefited? Let me look at just one example. Let's not forget that all tax rules are written for Vishwakarma's India, not for Kuber's India, not for favorite businessmen. When it comes to crony capitalists, there are special rules. Please listen. In 2016, there was a rule that there can be no SEZ which has only a power plant. No power plant, only SEZ. But for a very special friend, Mr. A, this was done in Godda, Jharkhand. Mr. A received not only billions in benefits during the capex phase, but receives an ongoing benefit on no import duty for importing coal, no coal cess, no domestic supply obligation. Savings of clean energy cess were 320 crores per annum. Custom tax and GST benefits were another 2,000 crores. Now that things with Bangladesh have soured, the government has said you can sell power domestically. But have you recovered the back interest and the taxes which were meant for the SEZs? Plant was built by a Chinese contractor with Chinese equipment. Customs duty free, GST free, tax free. Not using Jharkhand coal, not giving Jharkhand power, not paying clean energy cess, and currently employing less than 1,000 people. For some people, rules, laws, acts mean nothing. गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हो, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता. Stock market investors, corporates, small business owners have all become victims of the worst kind of tax terrorism. According to the last budget receipt of July 24, total income tax under dispute was 10.5 lakh crores.
This figure has doubled from 5 lakh crores in 2015 to 10.5 lakh crores now in 23. So much for the promise of eliminating tax terrorism. When you're looking at the CBDT's Action Plan 24-25, it gives us data on pending appeals. It's telling us every year there are more pending appeals than appeals which are being disposed of. So what kind of dispute resolution are we managing? It is estimated that there's 6 lakh pending appeals today. The Indian IT tax department has followed an adversarial approach. It unnecessarily pursues all appeals at all levels, regardless of outcome. And all the department officials, there is absolutely no penalty on pursuing frivolous regulation. So kahin bhi kuch bhi case laga do. There's bad drafting of tax laws, different interpretations. High courts are providing divergent opinions. There's confusion. The judiciary simply cannot handle this mountain of pending appeals. More than 17.5 lakh Indians have acquired foreign citizenship of another country in the past decade. An estimated $21,300 millionaires left India in the past 3 years alone. तुमसे दूर जाने की ख्वाहिश नहीं, पर तुम्हारी शक के डर से बहुत डर लगता है. तुमसे दूर जाने की ख्वाहिश नहीं, पर तुम्हारी शक की नजर से बहुत डर लगता है. This is what people are telling this government. GST is a nightmare. You are having to wade through 100 different tax rates, including cesses. Multiple rates, ensuing confusion has facilitated an alarming GST evasion of 2 lakh crores, almost double the 1 lakh crore evasion that was there in fiscal year 2023. 18,000 fraudulent entries have been uncovered. Many more are likely. Senator Barry Goldwater, the Republican senator in the United States, famously said that the Income Tax Act has created more criminals than any other act of government. This is really proving true in India's case. Honorable Chairperson, the government's draconian taxation policies have turned our stock market into a breeding ground for tax uncertainty. Let's examine the facts. They're mind-boggling. 2004, capital gains tax eliminated, replaced by a 0.1% securities transaction tax. 2018, BJP government reintroducing 10% long-term capital gains tax. 2024, this long-term capital gains hiked to 12.5%. Short-term capital gains increased from 10% to 15% in 2018 to 20% in 2025. Securities transaction tax hiked by 60% in 2024. Corporate dividends, once taxed at flat 15%, are now taxed at slab rates with TDS. The government and the SEBI have together destroyed wealth creation in the stock market, both domestic and foreign. When you have Europe, when you have the US, you have Singapore, who are aggressively attracting investors, we are driving them away with policy arrogance and excessive taxation. Also, the new Income Tax Amendment Act contains something rather alarming in the fine print. Is the government trying to bring back electoral bonds in other shape or form? The bonds were declared unconstitutional in February 24 by the Supreme Court. And yet, in the new Income Tax Bill 25, Schedule 8, provisions relating to the electoral bonds are mentioned. Is this legislative oversight? In which case, very shoddy work on your part. And if it's not oversight, then it shows that you're keeping the road open so some kind of back entry to your favorite Hafta collection system. This is very clear. Electoral bond data shows that companies with negative profits donated 434 crores to the BJP. 41 companies under investigation donated 2,500 crores to the BJP. 30 companies facing investigation donated 335 crores. Madam Finance Minister, the CBDT in your hand is an engine to spur India's growth through transparent and progressive taxation. Please do not turn it into another rogue agency like the ED and the CBI, who have essentially become professional collection agents for this government. 193 cases pursued by the ED, 2 convictions. 2 convictions. 97% of ED cases are against opposition politicians. 23 of 25 switched to BJP, cases were dropped. We are now truly in an Orwellian state. The finance bill doesn't merely focus on taxation. It gives the government sweeping powers of surveillance under the guise of preventing tax evasion. The government now seeks the right to monitor emails, see social media accounts, private messages. The finance ministry can share this data with the enforcement directorate, with the IT department, and all other agencies. If 97% of this country is tax exempt,
then who will the tax authority scrutinize? The poor 3% who are actually paying taxes, who are the hardworking individuals, who are propping up the service sector. Instead of using Pegasus secretly, the government is now openly spying in the name of suspicion. The new income tax law enables the sharing of information across 10 government agencies. Is this the government's idea of respecting tax-paying citizens who are funding its coffers? I've got time, madam, 2 minutes. While I always try and stick to the narrow confines of topical debate, I am now going to take a cue from the Honorable Prime Minister, who so effectively managed to speak about Vasudeva Kutumbakam when asked a pointed question by the US media about crony capitalists and their accountability to the law. So I too am digressing to speak on an issue which has immense controversy and intrigue attached. The story about bundles of currency notes discovered in the outhouse of a judge of the Delhi High Court. Now, the veracity of the incident is still being ascertained, but the Godi media has gone to town debating whether the appointment of judges and how the government of the day must have a preponderant say in the appointment process. We saw the Sushant Singh Rajput case suicide and how an innocent woman was vilified by the Godi media and name-dragged through the mud. Same thing happened in my case. Now you see this media are trying to mahol banao. They're trying to toe the government line to suborn the higher judiciary. Someone who cannot be named in this house, who presides over a neighboring chamber, has already added his 2 cents and said how he thinks that the government should do away with the collegium system. Mark my words, just like the Election Commission has been emasculated by the government takeover of its appointments process, this brouhaha and media plans are the beginning of an effort to bring back something like the NGAC with complete government control and do away with the collegium system. No amount of money apportioned to the judiciary will be of any avail unless its independent character is zealously guarded. This is something that we in this house must be allowed to debate. Coming back to the finance bill, it is nothing but a testament to this government's flawed economic vision. I oppose this bill because it taxes the wealth creators, ignores, I've got 10 seconds, madam, ignores the poor and empowers the government with unchecked powers of intrusion. India deserves better. I end by quoting George Orwell in 1984. Every record has been destroyed or falsified, every book rewritten, every picture has been repainted, every statue and street building has been renamed, every date has been altered. And the process is continuing day by day and minute by minute. History has stopped. Nothing exists except an endless present. रूल है, थैंक यू वेरी मच मैडम. पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, स्पीकर का डायरेक्शन 115, वो ये कहता है कि कोई भी माननीय सदस्य यदि कोई आरोप लगाते हैं, एक बड़ा आरोप उन्होंने ईडी और सीबीआई पर लगाया कि वो सरकार की तरफ से जो है पैसा कलेक्ट करते हैं। मेरा आग्रह होगा कि उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए कि ईडी और सीबीआई ने कौन सा टैक्स कलेक्ट गवर्नमेंट के लिए किया, किन लोगों को परेशान किया। यदि नहीं करते हैं तो एक्सपंज करिए, नहीं तो प्रिविलेज चलाइए। Thank you very much, madam, for giving me an opportunity to speak on this Finance Bill 2025. Madam, I would like to congratulate this government for having presented the Finance Bill through which they have campaigned from the Parliament and won the Delhi elections, madam. They have utilized this Finance Bill, giving the SOP of 12 lakh exemption, income tax exemption, mainly for the Delhi elections, and they have achieved their aim and they have won in the Delhi Assembly. So I would like to congratulate them on their efforts, madam. Madam, this finance bill, we see that most of the states, several people have spoken about this, madam. When we give 1 rupee, we get back 29 paisa or 30 paisa. If you look at the statistics over the last 10 years, Tamil Nadu has paid about 8 lakh crores in the form of direct taxes, madam. But the devolution which has come back to Tamil Nadu is only about 2.4 lakh crores. 5.6 lakh crore has been utilized by the union government, where it has been disbursed to other states like Uttar Pradesh, Bihar, and other less performing states, madam. Madam, we do not have any qualms about that, because we believe that those who are able should be able to support those who are in a very pathetic situation. But problem is, if you are looking at the state of poverty, the status of poverty throughout this country, if you look at the south states, the numbers will be in the range of about 0.5 to 1.5 or 2%, madam.
South states believe that poverty should be eradicated, and they have been striving continuously for the last several decades, eradicating poverty, madam. Whereas if you look at North states, even the Honorable Prime Minister's state of Gujarat, the poverty rate is in the range of about 9 to 10%. Bihar, it is about 20%. And UP, I think it must be around 15 to 20%. Despite years of support from these states, it is sad to note that they are not even able to provide a decent life for their own citizens, madam. If you look at Tamil Nadu, right from the last 50 years, from the time when Peraranyar Anna has been taken over from 1967, we have had a situation where we have insisted that we should uplift the downtrodden, madam. That has been the motto behind which the government has worked. Even our present Chief Minister, M.K. Stalin, he has said that Ellorkum Ellam, everybody should get everything, madam. To that end, he has described about how economy should be utilized for empowering the weekend, madam. To that extent, he has given, he has brought out a scheme where every lady who is in the poverty range, when we say poverty, we are not talking about the 27,000 rupees per annum earning people, madam. We are talking about people who are earning even up to 1 lakh rupees per annum. We are saying that they will be supported with 1,000 rupees per month, where they will be able to improve their quality of life. Not only that, to enhance education, he has brought out a scheme where, initially it was brought out for the girls, where every month they were given an incentive of 1,000 rupees if they have studied from a government school and they go to any college. This has improved our graduate enrollment ratio. The whole country, the present target what has been achieved so far in the country is about 25%, and the government is talking about achieving 50% by 2030 or 2050, madam. But we already have an enrollment ratio of 52%. This shows the amount of importance our state leaders, especially our present Dravidian model, has done for empowering women and improving the status and life of women, madam. Madam, apart from the taxation which is being done to Tamil Nadu faced huge calamities, madam. 2 years we had huge calamities where we had implored to the union government to provide from the National Disaster Relief Fund to the tune of about 40,000 odd crores, madam. Despite repeated pleas, we have not had the amount required. We have only been given a paltry amount of 200 crores as a grievance, madam. Madam, it is a very, very sad state of affairs where we have given 5.6 lakh crores to the union government, and even during a disaster where people have died, people have suffered, people have lost property, people have lost their livelihood, the government does not have any courtesy or pity on these people, madam. It is a shameful thing that the government is treating people of Tamil Nadu this way. Madam, apart from that, this government is talking about education and the importance of education, madam. Recently, they have introduced this National Education Policy 2020, and in which they are talking about a 3-language formula, and where the union government was to release a fund of 2,152 crores. We have been asking for that, and they have been blackmailing the state government, saying that unless you introduce the national education policy with the 3-language formula, we will not release that 2,152 crores, madam. And our Honorable Chief Minister has made it abundantly clear that even if you give 10,000 crores, we will not implement the 3-language policy. Let me explain about the 3-language policy, madam. Madam, you claim that 3-language policy has been implemented throughout the country, madam. But I would like to ask one question. If that is the case, why is it that most of the North MPs, people from the North, most of them do not speak English? Why is it that most of them do not speak English excepting Hindi? I would challenge anybody in this parliament, madam, if people from the North, apart from Hindi, is there any other language that they can talk? They are talking about a 3-language policy where they know nothing other than Hindi, whereas in South, they expect us to learn 3 languages, madam. I think this is an unfair way of treating people, especially the students, madam. We feel that 2-language policy has helped Tamil Nadu go a long way. We have economically, at the time of freedom, we were one of the 3rd poorest states in the country, and now we are the 2nd richest country, madam. And this performance has been achieved because of our policies, madam. Madam, coming to the GST, madam, the GST has become nothing but a tax terrorism, madam. People are going about where business houses are being threatened and they are being looted out of their money,
where it is being done in a very unconstitutional way. It is almost like a terrorism, madam, where they are threatening these people and they are collecting this money. And also there has been several representations where people who are lame, where they are having processes needed, they have been charged 18% of GST, madam. I feel that it is a shameful thing that the government is trying to make money even out of people's misery, madam. So I would expect this government to reconsider the GST rates for most of the processes and life-saving devices, so that the life of the patients is made much better, madam. Madam, when you're talking about the electoral bonds, Maua had already mentioned, Honorable MP, she had mentioned that the electoral bonds whether it will be reintroduced again. I would like to point out that the finance minister, even after the court had said that it is illegal and unconstitutional, the Honorable Finance Minister had said that we will bring back electoral bonds again. I feel that the concept of electoral bonds was nothing using the enforcement directorate. I would not want to use the terminology enforcement directorate, madam. I would say that it is an extortion department. They have been extorting, where every time, whenever, if you see the pattern, when the details were revealed, when the data was revealed, it was seen that there is an ED raid on the person, and then there is electoral bond amount which has been paid. So this is the way in which this government has been extorting money out of business houses. Even when you're coming to this finance bill, the finance bill gives authority for the income tax officials to break into their virtual spaces, madam, to go and crack open their codes and get all the data, where even the middle income people will probably not be spared from the clutches of this government. Yes, they probably are going to be suffering more, and that is one of the reasons why Honorable MP Mr. Shashi Tharoor had talked about the high net worth individuals who are leaving this country. The reason why they are leaving this country is because the tax terrorism and the way the people are being treated is something which is totally unacceptable, madam. Madam, the Honorable Prime Minister is talking about Viksit Bharat, which I inquired and found out that it means a developed India. To make yourself a developed country, madam, when I last checked, the per capita income should be about 15,000 US dollars, madam. But currently, India has only a per capita income of about $2,500. And I would also like to point out that Tamil Nadu's per capita income is about 4,000 US dollars, madam. And with 2,500 US dollars, to say that we are going to become a developed nation, I think is fooling the people of this country, madam. Because to become 15,000 US dollars per capita income, your GDP has to be about $22 trillion. Right now, we are struggling to even achieve $5 trillion. Nishikant Dubey was talking about the number of people who are relinquishing their citizenship was about 22%. I find that very, very hard to believe, and I think he has to substantiate it, madam, because the total population of US is about 40 crores roughly, and out of 40 crores, if you're talking about 22, you're talking about 8.8 crore people who have left the country. I feel, in fact, there have been complaints about migration migrants going in, so many millions of migrants who are going in. So I wish that Mr. Nishikant Dubey will check and get the facts and submit it to this parliament, madam, because like every other lie, whatever the treasury benches has been pervading, I think this is going to be under the radar, and I would like that to be corrected on record, madam. Very good, madam. When we are talking about the amount of money which has been written off, 18 lakh crore has been written off for as NPA, and Honorable Finance Minister was trying to explain that they are trying to recover that money. But trying to recover that money is not something which will be possible, because if they were to do that, they would have done that already, madam. If it has not been done so far, I feel that no way they will be able to retrieve that. But at the same time, when the farmers, when the Honorable Prime Minister had promised that the farmers' income will be doubled, instead of doing that, at least you can waive their loans, madam. The government of Tamil Nadu has done several instances where they have waived loans for farmers, madam. Madam, one last point I would like to say. Honorable Prime Minister, 10 years back, when he was coming into the office, he gave a promise that he will give us 2 crore jobs, 15 lakhs into everyone's account, reduce the rate of the dollar, reduce the rate of petrol. None of that has been achieved in the last 10 years, madam. It is shameful that a government of this caliber is allowed to continue, and I would request the minority government, which is being held up by the TDP and JDU, those people also to reflect on the promises made and what they have achieved, and take necessary steps during the delimitation process. Kindly ensure that fairness is there during the delimitation process, and also ensure that
Hindi, the triple language formula policy is abolished, madam. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you for allowing me to speak on the Finance Bill 2025. I have four areas of focus, ma'am. Before I get into that, let me start off by congratulating the Finance Minister for two issues, ma'am. The first issue is the indirect tax collection has risen by almost 16.2% compared to the last year, ma'am. Second issue that I want to congratulate her is with regards to there is a tax exemption given up to 12 lakh rupees for the income tax payer, ma'am. There's almost 1 lakh crore that has been foregone by the government. But still, the assumption is that by next year, there will be increase of 13.4% in tax receipts, ma'am. So this shows the confidence in the Indian economy and in the Indian financial system, ma'am. I congratulate her for these two issues, ma'am. Coming to the four focus areas that I have. The first one, ma'am, it is regarding faceless e-assessment. I have a data from 2017 to 2021-22, ma'am. This system has made this faceless assessment has made the system very transparent and also made very efficient, ma'am. But there are almost 5,98,448 cases in this period of 2017 to 2021. They have been filed, and out of these, close to 6 lakh appeals, 73% of the appeals have been disposed of. Still, there are 27% of the appeals that have not been disposed of, ma'am. So the amount that is being locked up, because these appeals are not being disposed of, amount that is being locked up at any point of the time is almost 58 lakh crores, ma'am. So if I extrapolate that of the disposed 73% and calculate based on the 27% that has not been disposed of, it is almost 15 lakh crores of money that has been locked up in the system, ma'am. So I request the finance minister to clarify on the way forward so that this locked up amount can be released, so that it can be released into the second focus area is, ma'am, it's regard to the GST collection. It has grown by almost 77% from 11 lakh crore in 2020 to 20 lakh crore in 23-24, ma'am. But with the growth in the GST collections, there are also pending appeals that have grown from 5,000 to 15,000 in the last 5 years. This is almost 3 times the growth. So the way forward is, there are 2 ways that are there. The first one is whether we are going to take the 15th Finance Commission recommendation and make certain changes to the rates and merge them and make the GST simplified so that it's easier for the GST payers. And second way forward is, there are a lot of state goods and service tax appellate tribunals at the state level which are not functional, ma'am. I think the union government has to handhold the states and make these tribunals functional, ma'am. So if you do these 2 things, definitely these pending appeals that have been raising will be curtailed, and this will in a way add to the revenues of the state also, ma'am. And third focus area is the custom duty collection. In 25-26 budget that has been presented by the finance minister, the expectation of the custom duties is around 2,40,000 crores. That is almost 5.6% of the gross tax revenues, ma'am. But when we are hearing for the last 3 or 4 months after that Trump has come into power in US, with regards to the tariff regime that is going to be effectively come in coming months. So this 2,40,000 crores, whether this can be with the new tariff regime that is going to come, if this will be reduced, if it is reduced, how this can be compensated and from where it can be compensated. If the finance minister can clarify on this, that would be great, ma'am. And the fourth focus point is with regards to the total capex. Total capex that we have spent in the last 10 years is 50 lakh crores that have been spent, ma'am. This is an amazing achievement that we have made in the last 10 years. And with the 50 lakh crore that have been spent in the last 10 years, our railways have been ranked top 5 globally. Our metros have become 3rd largest in the world. Our airports have become 3rd largest domestic aviation market in the world. Our national highways have become 2nd largest in the world. This has been achieved within 10 years. This is not
not that is easy to achieve, but this was able to achieve because of the hard investments that have been made into the infrastructure in the last 10 years. But in the last 2 years, most importantly, in the last 2 years, there's a underutilization of the capex. Almost in the last year there was 75,000 of underutilization. Before that year there was almost 25,000. In total there was 1 lakh crores of underutilization of capex that has happened in the last 2 years. So why I'm mentioning about this underutilization is, instead of keeping it underutilized, can we bring it into the system? How we can bring it into the system? Can we invest in the new technologies that are coming about? We can invest in the R&D activities. Why we have to invest in the R&D activities and in the new technologies? Because if you look at the foreign institutional investors in the last 3 or 4 years, where they have gone, where they have invested, if you have verified it across the globe, mostly they are interested not in the hard infrastructure projects, but they are interested in investing in the new technologies that are there. If we can use this underutilized capex into these new technologies that are there, these foreign investors also will come in and invest in that, and the tax revenues also will be increased, ma'am. So I hope the finance minister will take this into the account. And I cannot talk about finance bill without talking about Andhra Pradesh. You all know, ma'am, everyone in the house knows how Andhra Pradesh has been bifurcated. It's very unscientifically bifurcated, man. We have a revenue deficit of 16,000 crores in 2014-15 when the state was bifurcated. And the most shocking was when the national share of agriculture sector has reduced from 17% to 14.4% in the last 10 years, from 2014 to 2024. You know what has happened in Andhra Pradesh, ma'am? In Andhra Pradesh, our reliance on agriculture sector has increased from 24%, which was 24% in 2014, to 35% in 2024. So we have gone into the primary economic model. Even in the service sector, which is a tertiary economic activity, our share was 51% in 2014. It has come down to 41%. So our whole economy has been reversed. Our whole economy has been backslid into agriculture-dependent economy, ma'am. And in contrast, if you see Telangana, Karnataka, and everything, they have capitalized on the service sector that has been prevalent in the states, ma'am. So in the last 5 years, in the last 10 years, we have become revenue deficit. At the same time, we have become very much reliant on the agriculture activities, ma'am. So the request from our side is understand the issues of Andhra Pradesh and grant us the revenue deficit grant that we've been asking for the state of Andhra Pradesh, ma'am. Not only because of bifurcation of the state in an unscientific way, but also we have been facing troubles because of the financial mismanagement that has happened in Andhra Pradesh in the last 5 years, ma'am. You all know, when you talk about Andhra Pradesh, the first thing that comes to anyone's mind in this house and everywhere is, they all talk about the big budgeted movies of Andhra Pradesh. You talk about Bahubali, you talk about Triple R, you talk about Pushpa. They all collected 1,700 crores, 1,800 crores, 2,000 crores, huge amounts they have collected. But ma'am, I want to put across a story in this house which has much more value, much more collections that have happened within the last 5 years in the state of Andhra Pradesh, ma'am. You must have heard about Delhi liquor scam. Whatever you heard about Delhi liquor scam, whatever you heard about the numbers in the Delhi liquor scam, when you compare with what has happened in Andhra Pradesh, it's just peanuts. The repercussions are seen in the parliament. There's an MP in the Rajya Sabha who has resigned from his post before his term has ended, even though he has 3.5 years of term, 4 years of term left. Even then, he has resigned and said, "I'm quitting politics." It's because of this liquor scam that has happened in Andhra Pradesh, ma'am. This liquor scam is just like how the movie, how this Triple R movie is there, how Pushpa movie is there, where there's a pre-production, production, and also distribution. Even for the liquor scam, also there's a pre-production, production, and distribution happen. What is the pre-production? Pre-production was the narrative was built. The narrative was built. The narrative was built in pre-production level. The narrative was built in the pre-production level, where it was mentioned that once coming into power, we will definitely prohibit the alcohol in the state. We'll prohibit the alcohol in the state was a narrative built. If you don't prohibit the alcohol, the rates of the alcohol will be raised to such a level, normal people cannot consume that. That is a narrative that was built at the pre-production level. What happened after that? After that, once the production stage has come,
they have gone to the companies which are producing this alcohol and said, these companies which are producing the alcohol said, we are raising this amount, we are raising these prices, you want to give it or not? They said, they're all international brands. They said, we cannot supply this alcohol at this rate. So they quit. So what happened at the production level was all the distilleries in the state, 20 to 25 distilleries were taken over. Not only those distilleries have taken over. On top of that, what has happened was 26 new companies were incorporated. 26 new companies were incorporated. Adan was incorporated in December 2019. Graysons, Leela, JR Associates, PV Spirits, they're all incorporated in March 2020. There are almost 26 new companies were incorporated for the production of this alcohol. What has happened once these companies were incorporated, they started producing new brands, which no one in this country ever heard of. I'll read out the name of these brands. SNJ 1000, British Empire, President's Medal, even President is not left out. HT Gold Whiskey, Anytime Gold, all these brands were brought into the market. Never heard of, never seen of. Never seen. These have all been given. They've been taken to the market, got into the market by these distilleries, which have come up within a few days after 2019. So what these brands have done at the production level, these have been produced, these brands have been produced. Once these brands are produced, how they will be distributed? They have given these brands to APSBCL, State Breweries Corporation Limited, and once they given it to State Breweries Corporation Limited, they were sold in the shops owned by the government. How they sold in the shops? That is a very interesting question. How they sold in the shops? They have given these breweries to all these shops, and once they are given there, all the transactions were cash transactions. No, there's no cash transactions. Sir, last 1 minute, sir, I'll conclude. So I have 15 minutes time, sir, I'll conclude, sir. No digital payment. There's no digital payments. I'll give you the number, sir. Out of 99,000 crores that was sold in the retail shops in those 5 years, 2019 to 2024, only 650 crores were cashless transactions. So whereas in the country, where the 99,000 crores were in cash, that has happened, sir. Whereas in the country, it was reversed. Yeah, the UPI transactions have gone from 1 lakh crores in 2017-18 to 200 lakh crores in 5 years, 138%. Whereas in Andhra Pradesh, on the sale of liquor, it has been reversed. So I'll conclude in 1 minute, sir. The last 1 point, sir. So how this has been rooted out? This because of this, there's almost a mismanagement of 18,000 crores of money has been mismanaged. Whose money is this, sir? This money belongs to SC and ST communities. They need to be given to the SC, ST suppliers. This belongs to BC communities. This belongs to minority communities. This belongs to every citizen of this country, sir. Not only this 18,000 crores, sir, there is 4,000 crores of this money has been binami and transacted and taken out of country into Dubai and also into Dubai and Africa, sir. There's 2,000 crores of rupees that have been taken out of from Andhra Pradesh to Dubai, sir. This has been done by N. Sunil Reddy. By using N. Sunil Reddy, he used a face of one infrastructure company in Hyderabad. Through that, 2,000 crores of money has been taken out and parked in the Dubai, sir. Another 1,000 crores has been parked in Africa, sir. All these belong to state of Andhra Pradesh, sir. Belong to people of Andhra Pradesh, sir. So we request the ED. We request the ED to investigate into every issue. Investigation because SIT. These are all the report. These are report given by SIT, sir. These are given by the SIT, sir. SIT has only certain extent where they can investigate, sir. But ED is the one which can verify the transaction that happens between the countries, sir. We request ED to intervene into this, sir. So with this observation, sir, we request revenue deficit grant to be given, and also we request the government to think of bringing, because in the Delhi we have seen, in Andhra we have seen bringing liquor under the GST, sir, so that this kind of camp won't happen. Thank you. महोदय, आपने मुझे 1 मिनट के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, इस सभा सदन में एक बातें हम सुनते हैं तो हमको तकलीफ होती है इस बात की कि सब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने जुमला कहा कि 1 साल में 2 करोड़ हम लोगों को नियोजन या नौकरी देंगे। इस पर लोग हंसी लगाते हैं। हम एमएसएमई विभाग को डील करते हैं महोदय। हम आपको बताना चाहते हैं कि एमएसएमई में अभी तक 26 करोड़ लोगों को नियोजन हमने दिया है
और 6 करोड़ लोगों को निबंधित किया है, यानी 32 करोड़ लोगों को नियोजन हम लोग देने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो कहे हैं उससे ज्यादा हम अपने विभाग से दे रहे हैं, हुजूर, यही कहना चाहते थे। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री दिलेश्वर कामत जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिनके द्वारा भारत की जनता के हित में वित्तीय सुविधाओं को सुगम एवं आसान बनाने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। महोदय, भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में वित्त विधेयक 2025 में सरलीकृत आयकर संहिता की शुरुआत कर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्तावनाओं को प्रभावी करने के लिए लाया गया है तथा इसका मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन को आसान बनाना, कर विनियमन को में स्पष्टता को बढ़ाना, करदाताओं की सुविधाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ कराधान परिवर्तन और आर्थिक सुधारों सहित वित्तीय प्रस्तावों को नियंत्रित करना है। महोदय, सरकार ने इस विधेयक के द्वारा जनहित में मुख्य रूप से आयकर की दरें, प्रत्यक्ष कर, आयकर, अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क टैरिफ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर प्रकृति, भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 2002 का संशोधन, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 का संशोधन के साथ कई अधिनियमों के धाराओं में संशोधन किया है, जो देश हित, किसान हित और आर्थिक हित में है। महोदय, इस विधेयक के द्वारा आयकर के दर को वर्ष 2025-26 के लिए आयकर दाताओं को 12 लाख तक आमदनी में कोई कर का भुगतान नहीं करने तथा अन्य क्षेत्रों में भी राहत देने का है। यह स्वागत योग्य है। महोदय, सरकार ने विगत 10 वर्षों में करदाताओं की सुविधा के लिए बहुत से सुधार किए हैं, जैसे अप्रत्यक्ष कर निर्धारण, करदाता चार्टर, त्वरित वितरणी, स्वकर निर्धारण पर लगभग 99% वितरणी और विवाद से विश्वास स्कीम। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कर विभाग के पहले विश्वास बाद में जांच की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नया आयकर विधेयक भी लेकर आई है। महोदय, सरकार ने वित्तीय वर्ष में सुधार और विकास के लिए बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया है। यह संबंधित सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेगी। विदेशी निवेश से संबंध मौजूदा सीमाओं और प्रतिबंधिताओं की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरलीकृत किया जाएगा। वित्त विधेयक 2025 में संशोधन करदाताओं के हित में है, क्योंकि इससे उन्हें कर नियमों का अनुपालन करने के लिए गंभीर परिणामों का सामना किए बिना दूसरा मौका मिलेगा। महोदय, संशोधित प्रावधान करदाताओं को अभियोजन से बचने की अनुमति देता है, यदि वे धारा 206(3) के तहत टीसीएस विवरण दाखिल करने की निर्धारित समय सीमा से पहले सरकार के पास टीसीएस राशि जमा करते हैं। यह समय सीमा आमतौर पर टीसीएस के संग्रह के बाद तिमाही के भीतर आती है। यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि करदाताओं को किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने से पहले अपने भुगतान को सही करने का अवसर देता है। इस परिवर्तन का उद्देश्य अनुपालन प्रक्रिया को अधिक आसान और करदाता अनुकूल बनाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भुगतान में छोटी मोटी चूक के कारण गंभीर कानूनी परिणाम न हो, बशर्ते कि समस्या का निर्धारित समय सीमा के भीतर ठीक कर लिया जाए। महोदय, इस विधेयक में किसान भाइयों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। खेतिहर किसान भाइयों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना और उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई पुनः बीमा सेवाओं से संबंधित कतिपय मामलों में सेवा कर में भूत लक्ष्मी छूट के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्रतिकूल मौसम की घटनाओं, जैसे कि कम या अधिक वर्षा, उच्च या निम्न तापमान, आर्द्रता आदि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है तथा
तथा पुनः गठित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। महोदय, सरकार के द्वारा भारतीय डाक भुगतान बैंक की सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक पहुंचाया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अवसंरचना के लिए कॉरपोरेट ब्रांड हेतु एक आंशिक ऋण संबद्ध सुविधा स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए की स्थापना की जाएगी। केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में भी पूर्व घोषणा के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025 में केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्रेशन का पुनरुद्धार किया जाएगा तथा आवधिक अवधारितीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली लागू किया जाएगा। महोदय, सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष कर के लिए सीमा शुल्कों से संबंधित प्रस्तावों का उद्देश्य टैरिफ संरचना को युक्ति संगत बनाना और शुल्क प्रतिलोभ का समाधान करना। इसके घरेलू विनिर्माण और मूल्यवर्धन को सहायता मिलेगी, निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार सुविधाजनक बनेगा और आम आदमी को राहत भी मिलेगी। सरकार के द्वारा विशेष रूप से औषधि दवाओं के आयात पर राहत के लिए कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है तथा 6 अन्य जीवन रक्षक दवाओं को 5% के रियायती सीमा शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। पूर्ण छूट और रियायती शुल्क के निर्माताओं के लिए थोक औषधियों पर भी इसी प्रकार लागू होगा। महोदय, वित्त विधेयक 2025 राष्ट्र हित, देश हित, आर्थिक हित, जनहित एवं किसान हित का है। मैं वर्ष 2025-26 के लिए वित्त विधेयक 2025 का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री अनिल देसाई जी। Thank you, Chairman sir. The Finance Bill 2025 is being discussed and debated in the House. I would like to mention few important aspects of the bill and of course would be seeking clarifications to the same when the Honorable Finance Minister replies to the House. So describing the vision of Vikasit Bharat, that is developed India, Honorable Finance Minister identifies agriculture, MSMEs, investment and exports at the macro level as its 4 powerful engines, with reform as its fuel and inclusivity as its guiding spirit. The budget focuses on various development measures, including boosting manufacturing, furthering Make in India, enabling employment-led development, investing in people, the economy and innovation, securing and enhancing energy supplies, promoting exports and curbing imports to achieve the goals of Atmanirbhar Bharat. Sir, Honorable Finance Minister announced slew of measures to spur the agricultural growth and productivity, thereby benefiting the Annadata. Total of 1.37 lakh crore has been allocated to Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, which is 2.5 lower than the revised estimates of 24-25. Further, the measures have been introduced to be implemented to make agriculture a lucrative occupation, and therefore steps are proposed like easy access to affordable credit, adequate availability of fertilizers, access to quality seeds, remunerative pricing and agriculture produce, thereby doubling the income of farmers. However, the schemes like Dhan Dhan Krishi Yojana, which focuses on 100 underperforming agricultural districts, does not provide structural reforms in supply chains, MSP guarantees or crop diversification. There is no clear roadmap for tackling farmer distress, climate change impact on agriculture, or rising costs. The reliance on NAFED or NCCF for procurement of pulses may not be sufficient to ensure stable prices.
Over the years, agriculture crop insurance hasn't been of significant help to the farmers in reality. And in reality, on the ground, they are kept away from getting bank credit by way of farm loans on the pretext of low CIBIL score. This results in continued unabated suicides in Marathwada and Vidarbha regions of Maharashtra. This is a worrying cause, and government should ensure that Annadata gets its rightful dues. Incidentally, Maharashtra, including Mumbai, the financial capital of the country, contributes the most to the central exchequer, that is around 40% of the taxes. And what it gets back meagerly 6% from the devolution of central funds. I think that should be also revisited while working out from the finance commission, whatever the recommendations come, that needs to be reviewed. Sir, MSME and startup support lacks depth it requires. The government launched a fund of funds for startups in June 2016 with the corpus of 10,000 crores. Under this scheme, the government provides capital to alternative for investment funds who in turn invest in the capital, provides capital to alternative funds and startups through equity-linked instruments. A new fund named Deep Tech Fund of Funds that is also been proposed to encourage next generation of startups from technical and non-technical backgrounds. Also, credit enhancement of MSME has been proposed in this budget. However, it does not significantly improve access to low interest credit for small businesses. Rupees 5 lakh credit card limit for micro enterprises may be insufficient for expansion. Moreover, the lack of clarity or implementation and fund disbursement may slow down the business growth. Sir, as far as direct employment is concerned, the government should focus on the potential in public sector, central government undertakings like railways for employment. Public sector banks, insurance companies, oil companies, railways, they have tremendous potential to see the recruitment at the entry level of the youth. However, these public sector units are employing youth on 1-year apprenticeship that is happening in the banks and insurance companies too. And on completion of 1 year, they are left, the youth which comes in as an apprentice is left high and dry after 1 year. This leads to frustration in the young generation, which not only renders them jobless, but it affects their family environment too. The government should do away with this 1-year apprenticeship jobs and offer permanent employment to the youth of nation. Instead of strengthening public sector, government takes more interest in disinvestment and selling away the public sector companies to selected few private players. The general insurance company is the latest example that the employees of the general insurance companies are still awaiting their wage revision. Now, whatever conditions were put by the government, they have also been met by the companies, that their solvency ratio, which is very vital as far as insurance companies' profitability is concerned, their running of the business is concerned, they have achieved that well beyond that. Sir, next, this thing is regarding infrastructure investment is concerned. 11.21 lakh crore for infrastructure has been allocated with an aim to encourage higher private participation. Infrastructure related ministries are to draw up a plan of 3-year pipeline of project in PPP mode. States are also encouraged for the same. However, PPP mode has had mixed success till now due to delays, funding issues and disputes. Rupees 1.5 lakh crores interest-free loans to states may lead to misallocation of funds without strict accountability. So export promotion mission, which sectoral and ministerial targets driven jointly by Ministries of Commerce, MSME and Finance to be set up, and Bharat Trade Net for international trade to be set up as unified platform for trade documentation and financing solutions. Similarly, national framework to be formulated as guidance to states for promoting global capacity centers in emerging two-tier cities. These measures aim to boost exports, but they do not address the trade imbalances, raw material shortages, or global competition. Our trade policies still face high tariffs and regulatory bottlenecks, which may make it difficult to compete in the global market despite export incentives. Moreover, US President's announcement of reciprocal tariffs, which is to come on 2nd of April,
may further affect the bilateral trade rise. I hope the government is well prepared on this to deal with the United States, and I hope that it will score a brownie point for the nation. So nuclear energy investment raises safety and cost concerns. Rupees 20,000 crore outlay for small modular reactors raises concern about safety, nuclear waste disposal mechanism, and regulatory preparedness, especially regarding agreement on civil liability for nuclear damage, as amendments to nuclear liability laws may also increase risk for public safety and shifting of responsibility away from the private operators. Sir, allocation of rupees 1 lakh crore to the healthcare sector in this budget does look healthy provision, while daycare, cancer centers, and PM Jan Arogya Yojana for gig workers are introduced. The overall healthcare budget lacks substantial expansion. There is no comprehensive policy to improve rural healthcare access. Shortages of doctors and paramedical staff, deficiency of medicines in the government hospitals are the glaring examples of the plight of poor public health infrastructure. I'll make another 2 points because I'm the only speaker from my party. The budget shows allocation of 1.28 lakh crores for education, with increase of 6.22 over the last year's provision. However, the provision for education in the budget is 4.6 of the GDP. It remains below NEP targets and lags global peers. The ever-widening gap between urban and rural education needs to be bridged if the purpose of education to all and maximum literacy percentage is to be achieved. Heavy investment in AI, digital education, and geospatial infrastructure may further widen the urban-rural divide, as underprivileged population will be deprived of the same. What are the arrangements on equal distribution of resources have been made by the government in this regard? In this budget, sir, Honorable Finance Minister has exempted salaried middle class up to earnings of 12 lakh per annum. This has no doubt given much needed relief to the middle class. But at the same time, the government has given nod to the 8th Pay Commission, which may become operational in the year 2026. And therefore, the relief given in this budget may be washed out. At the same time, indirect taxes in the form of GST with several slab bands, which leaves middle class with hardly anything in their hands, which otherwise they would have saved either in the banks or spent in the market for their increasing needs. GST rate need to be rationalized, and also GST of 18% levied on insurance policies need to be brought down or curtailed, which is demanded by crores of policyholders of the nation. The fiscal deficit is estimated at 4.4% of the GDP, which is, although lower than the previous years, it remains significant concern for fiscal sustainability, sir. The heavy reliance on gross market borrowings, which has gone to 48.82 lakh crores, increases India's debt burden, raising concerns about repayment capacity of our country and potential credit rating downgrades. Thus, the budget focuses on agriculture, MSMEs, investment, exports, engine of growth. However, fiscal deficit, uncertain execution of schemes, and over-reliance on private investment pose major challenges. While tax benefits, infrastructure, and digital expansion are positive, the lack of direct employment support, healthcare expansion, and structural economic reforms may slow down inclusive growth. And last point, last but not the least, sir, may the Honorable Finance Minister enlighten this House about the PLI scheme, which was introduced in year 2020 in 14 key sectors, with the objective of boosting manufacturing and thus addressing the very important issue of unemployment in our country. As manufacturing sector contribution to the GDP is merely only 15%, which needs to go in another couple of years to 25%. That is the target set. Okay, thank but you, it is nowhere near this. Please conclude. May Finance Minister in a reply could answer to this. Thank you very much for giving me this time to express my views on this finance bill. Thank you. Thank you, Honorable Member. Honorable Member Srimati Supriya Suleji. Sir, I stand here today to speak on the finance bill. So what is really the purpose of the finance bill? Is to give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 2025-26. And what did we hear a rhetoric from the treasury benches?
it was digging up the coffins of the bygone era. It was unfortunate because I was really optimistic to hear something more from the treasury benches, but it was just the old era of last 5 decades of India's history. Because India is really going through a challenging time, because the globe is going through a challenging time. So with the disruptions or the changes in various dispensations all over the world, especially what is happening in America, which we're all reading, right or wrong, only time will judge it and history will judge it. But as of now, where we are standing is the headwinds of the geopolitical situation is the word uncertainty right now. And what is happening in India versus the uncertainty is what really this finance bill stands for. I will quickly mark out a few points which really I think we need to know, and the Honorable Finance Ministry needs to take cognizance of it. I'm not standing here just as an opponent, as a critic, but I'm concerned as a citizen also, who has 23 lakh stakeholders who I represent today, who are directly impacted by the decisions that we take here. And that's only about me multiplied by 500 people here and 200 there, so about 800 MPs here. The growth is at 5.4% today, where the manufacturing is sluggish, food inflation is disrupted. There are good days and there are bad days. I won't say it's high all the time because there are some good days. So I'm putting facts on the paper, on the table. Jobs are clearly stagnant. Rising trade, there is a gap. Disappointing capital flows. Weak urban consumption, which I will come back to. Then there is the private consumption is down. Exports have shrunk by 10.9%. I'm not only blaming the government, I understand. I may not be an economist, but I do understand that we have to take ownership of it. I'm not just criticizing, but the geopolitical situation, which I go back to, is one of the big reasons why trade. It doesn't mean Indian products are bad, but the situation is such that people are skeptical that, oh my God, I will ship today. And if something else happens in the next few weeks to come, as we are expected something to happen between the 2nd and the 4th April, then what happens to my goods? So that is the concern and the urgency and panic in the market right now. Exports have shrunk. Manufactured product prices have increased by 2.86% right now compared to what was January, which was 2.51%. Unemployment at 4.2%. There are 15% youth today which are jobless, and the number grows every day. The car sales is lot small. Where I come from is Maharashtra, Pune district. Pune district is the largest, one of the largest hubs of car manufacturing. So we have the Tatas, the Bajajs, all the big hubs. We have the Mercedes-Benzes, all invested there. The cars and the motorcycle market has gone down 17%. Sir, please, and I can authenticate this if anybody wants, is pure reason. There are 3 reasons what all of them are saying. One is affordability is a challenge today. High interest rates to buy it, and slowing down of the economy. So these are all the indicators which are showing that the economy is in trouble. So rather than riding and saying everything is wonderful, I think with full humility, let's put all our minds here together to find how are we going to ride this tiger which is waiting for us in the next few years, months to come, weeks to come, because of the global situation. Sir, the PLI scheme which my colleagues talked about, what are really the outcomes of these schemes? Because these are all interventions which came from the Treasury in their interventions today, but I really would like to ask them. Now, this is where the economy is. Now we come down to breaking up of the taxation. Now, there is the Finance Commission which has proposed reduction of federal tax revenues. That's what we are reading in the newspapers. What has been suggested by the government is that normally the tax is divided, and we were earlier at various percentage. Now we reach 40%. Then there was 41% agreed to give to the states. Now they're saying to roll back and make it 40%. This is retrospective. First of all, we have lost so much money with GST. I come from a state, Tamil Nadu. We are all states which give and contribute to the kitty, and we're very happy to do that. If we can help other states grow, we are very proud. We'll work harder and make sure we can give more to the kitty. But it cannot be at just the cost of our products. So I would like to ask that if from 41 we come to 40, the difference is going to be of 35,000 crores, which the central government is going to get. So that is our money, plus the cesses and the surcharges. This is surreptitiously, sir. I would like to put it on record. There are times monies which are supposed to be shared by the states are taken in the form of cesses by government of the central government.
And the states suffer because of that. And all our states are suffering for that. So what is this mechanism? It's completely retro. I mean, it's not fair on the states which are already suffering, sir. We all know that all the FIRs has pulled out of this. So why are people pulling out of the Indian economy? They're pulling out because they don't see the growth happening here. They prefer other economies going on. So what steps is this government going to take to make sure, and who is affected in the in the entire stock market, sir? It's the middle class which is getting hurt. Right now, even if these foreigners have pulled out to such a large extent, it's the Indian economy, the producers and the Indian middle class which is held on to it. There has been a correction of over 10% today in the stock market. So what checks and balances is this government going to do to make sure that this stays steady? So there's another very big intervention which we need to flag here is the gold loan. The gold loan is something which even the RBI has shown concern. Over more than 50, this is first time that has happened in India, that over 50% people are turning towards the gold loan. What is it signaling you? The RBI actually red flagged it. And what's most interesting for me in this whole scenario is we are looking at Hope with Shaktikanta Dasji. He used to first manage the monetary policy. Now he's going to be here managing the fiscal policy. So we have a domain expert. So I would really like to flag and ask the Honorable Finance Minister of India that what intervention is he doing, and we would want him to intervene because it's very, very critical for our monetary and fiscal policy right now, more so because RBI is talking about this gold loan. So it's a very, very important point, and it is going to hurt the economy if we don't get our act together on this. So I request the Honorable Finance Minister to be very, very concerned and make sure they take some action and be prepared for this because of the outcomes will hurt the country. The other big issue which I've raised several times is the FRBM Act. So the fiscal management is what this bill is all about. And the Honorable Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee ji, got this bill, which is one of the finest bills in the larger interest of the nation and the state. And Dr. Manmohan Singh ji continued it and improved on it. Now, what I want to flag about this is that in the FRBM Act, we do fiscal management. So we make sure that whichever government does not overspend. Now, the problem is, I'll give you an example of my state, sir. To make populist what should I say, programs, I'm putting it as diplomatically and correct as I can, that these are all wonderful schemes for the larger interest of the poor of this nation, which I appreciate. I like it, I support it. But now they have taken all the Adivasi funds and the Social Justice Department funds are used for populist programs. There's nothing wrong in having every government wants populist things. But I remember the Honorable Prime Minister, who is clear about his economics, talked about Revdis at one time. My question with full humility to the Honorable Finance Minister is that after this, what role or what checks and balances is government going to take so that the budget is well spent and the monies are spent which is for the Adivasis and which is for the Adivasis as well as Social Justice Department, which are used for other schemes only during election. So what happens to the Adivasis and what happens to Social Justice Department is my question. So is this government going to intervene for good management of fiscal deficit and good governance, which this government talks about? So are they going to walk the talk? For every state that gets into an election, they will be changing the rules of the game, which will not hurt us right now, but you will have legacy of issues which generations will not forgive us just for winning one election. Another important question is of GST. Vijay Kelkar, proud Maharashtrian as I am, we both come from the same state. A tall leader, a visionary, brought the GST to this country. What was the idea? The sole idea of the GST was one nation, one tax. The Honorable Finance Ministry, and in a budget, as a matter of fact, she mentioned that they're going to reduce the slabs. Well, the nation is waiting with bated breath. Because up to from 3% all the way to 28%, so many slabs, so much confusion. I'm not getting into the popcorn mess that my children have to deal with. Let them decide whether they want to eat salted, caramel, plain popcorn. And I don't want to get into that because I don't want to make this into a frivolous debate. This is a very serious debate for me. But my point to this government is, why is there so much all the time in the GST when it was a commitment made? She praised all the state governments, said state governments are doing very well. So I want to ask her, when will we become
one nation, one tax, which is the real soul of this. And all developed nations are doing that. If you say you're going to be, Nishikant Dubeji said he's going to be #1 in this country, we'll be very happy if your government becomes the first country in the world. We'll also be proud. Viksit Bharat mein hum bhi aapka saath denge. But to reach there, then what are you taking from the Western world? Also, I want to have the good practices also have to be taken. So when it's one nation, one tax, like all the other developing countries have done that, when is this government going to be one nation, one tax? I want to ask them this question. GST needs a lot of reforms, which are suggested by many of us, and many of my colleagues have talked about it. My one more 2-3 small points I'd like to ask this government is also about tariffs. Tariffs are a big concern for all of us. Now, this unilateral zero tariff for agri products, I want a reply in yes and no. We don't want to hear some long-winded story of what happened in the last 50 years. I want to know from this government that in the unilateral zero tariff for agriculture products, what is the stand of this government? Are they going to agree? Are they disagreeing? And if it's a no, they have to tell this nation that no agricultural product we will compromise. We will not compromise the farmers of this nation, and the policy will remain the same, whatever they have to discussions in America, we want to say. So 2 very small points, I'll finish my speech in. This thing about taxation, we are coming up with a new law. I'm fortunately a part of the select committee there, and we are having very, very good debate and discussions, and we're calling all the stakeholders. There is one small point I'd like to make, that everybody is here in this country wants to pay tax. We are all tax paying. Why is there always a fear about this tax? Most of my colleagues, my friend Kalanidhi also spoke about it. Every time there is this faceless or whatever this new thing, I am not taking away from the intent of this government. But why does this government like to scare people? Even in this new bill, they'll say, we are not going into people's mobiles and personal spaces. My only point is that they have to put checks and balances, everything. I don't want to get into whether high networks left, whether 22% left, that's not. If India really wants to grow, have a good tax regime, get fear out of people. People want to stay in India. People want to build India, but nobody wants to stay in fear. And the whole point is whenever you are going into people's spaces or taxing people, have trust. What is that? Vishwas, Vivad se Vishwas tak. Crores of rupees is stuck. So why are we not, what Vivad se Vishwas tak? Bring it for everybody. Extend that scheme. Show trust in people. Indians are very honest people by nature. That's why we globally go and do extraordinarily well. So this government has to stop. You are sitting here in government because Indians have voted for you. The same Indians who do not, you want to tax, you want to scare, you want to pay. It's their money only on which your election goes on with. So please, जिस थाली में खाते हो ना, उस नमक का थोड़ा तो ज्ञान रखो. Thank you. So stop raiding people, stop hurting people. People in India are honest. We are happy to pay tax. Just don't scare us and have a very transparent and a fair regime. Thank you. Thank you. शशिकांत जी, स्पीकर का डायरेक्शन 115 है. बैठिए ना दादा, बैठिए. कुछ अच्छा सरसा चल रहा है, कुछ पॉइंट है, बोलने दीजिए. तो आप मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी रेज नहीं करने दोगे? प्लीज बैठिए, बैठिए. प्लस दादा आप बैठिए. सभापति महोदय, एफआरबीएम एक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए, ये सही बात है. उसके कारण फिस्कल डेफिसिट पर काफी कंट्रोल हुआ, ये भी सही बात है. लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो जिक्र किया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2008 में, 2003 में ये एक्ट आया. 2008 में जब पूरे दुनिया में रिसेशन था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही एफआरबीएम एक्ट में चेंज किया और वो 6% पर चला गया. जो 4% होना चाहिए भारत सरकार का कंसोलिडेशन, जो फिस्कल डेफिसिट 4% पर जाना चाहिए, वो 6% पर हुआ. और उसके बाद 2014 तक जब आपकी सरकार थी वो लगातार इसीलिए ये चीजें जो है वो, और यदि उनको लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया तो उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए. ठीक है, 2014 तक वो 5.3% पर पहुंच गया था. देखिए माननीय सदस्यगण, देखिए सुनिए, प्लीज बी सीटेड. आप प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड. Honorable members, all the members, listen you with good patience. Honorable members, please be seated. Please be seated.
all the members of the house, listen to you, honorable member Supriya ji. You have spoken. You have spoken. You have spoken 15 minutes. You have spoken 15 minutes, and all the members listen you with good patience. So please, he has a point. He has a point. You lay down your point in the table. If there is anything, you lay down in the table. All is good. Please be seated. Mananiya Sadasya Shri Gurjit Singh Ojala ji. Please. You've spoken well, madam. You spoken well. You spoken well. You have a good suggestions, madam. You have a good suggestions to the government. Please, your speech well listened by all the members. Please, madam. Please. If you have any, that it's okay. What Nishikant? Okay, please, all listen. Please be seated. Only Supriya Sule ji will speak for 30 seconds. Please be seated. 30 seconds only, sir. Yeah, yes. I appreciate his point that in Yeah. 2006, Manmohan Singh sir had changed the rule. Okay. Just want to put it on record that he said it became 6%. I want to put it on record after that in 2009, the same Manmohan Singh ji's sarkar came with a better majority and ruled for 5 more years. That's my limited point. It's okay. माननीय सदस्य श्री गुरजीत सिंह ओझला जी. थैंक यू चेयरमैन सर. आपने फाइनेंस बिल पे बोलने का मौका दिया. इनकम टैक्स जो कि करीब 8 करोड़ लोग देते हैं, सभी सांसद लोग बता रहे थे, लेकिन इसके साथ जीएसटी भी आता है जो हम सब लोग देते हैं, और फ्यूल के ऊपर अलग से टैक्स है जो हर गरीब लोग देते हैं. लेकिन जो इसका हिस्सा है वो मीडियम वर्ग तक और गरीब वर्ग तक नहीं पहुंचता. सब ये कहते हैं कि ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं. मैं कहता हूं जब जीडीपी 2024-25 में 6.4% से आगे नहीं बढ़ रही, और डॉक्टर मनमोहन सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिसको ये सब लोग भूल जाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से आज पूरा देश उनकी इकोनॉमिक सुधार की वजह से जहां खड़ा है, उनका जो नींव है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश में रखी. और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपना देश ही नहीं, जो डेवलप्ड कंट्री है वो भी उनको मानते हैं. अक्रॉस द पार्टी लाइन किसी से बात करो, अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द कास्ट, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट. लेकिन सर मुझे दुख है एक बात, माननीय वाजपेयी जी जब देहांत हुआ तो हमें अच्छा लगा कि बड़े तरीके के साथ उनको इन्होंने अंतिम विदायगी दी. लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय आपको क्या हो गया था? उस समय याद नहीं आया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को? उस जगह राजघाट पे आपने जगह क्यों नहीं दी? क्यों नहीं? जिस बंदे ने इस देश को आर्थिकता की नींव रखी हो, क्यों ना मिले जगह उसको? Honorable member, क्यों ना मिले? honorable member, please come to the bill. सर ये बिल पे Don't go any. सर ये बिल पे थे निशिकांत जी. Please come to the bill. No, sir, Please ये बिल पे नहीं थे. No, you are not allowed. Please be seated. तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उनकी वजह से 2005 से 16 तक गरीबों का जो आमदन था 183% बढ़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जब व्हीट का एमएसपी था 10 साल में 119% बढ़ा था, और आपकी गवर्नमेंट में 47%. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जब राइस का एमएसपी 135% बढ़ा था, और आपकी गवर्नमेंट में 50%. 10 साल में 1 लाख कारखाना डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय लगा था, आपके समय सिर्फ 24,000. तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो सरकार है, अभी सांसद लोग कह रहे थे कि हम एमएसएमई में बहुत बढ़ावा हुआ है, लेकिन जनाब 50 करोड़ की सेल करने से लेस देन 50 करोड़ 45 दिन का प्रावधान दिया है बिजनेसमैन को. लेकिन जब 50 करोड़ के ऊपर सेल करो तो जब मर्जी पेमेंट करो, जब मर्जी ना करो, कोई पूछता नहीं है. वो गरीब लोग हैं जिनको आपको मदद करनी चाहिए, लेकिन आप मदद किसकी कर रहे हैं? ओनली 200 बिलियनियर्स
जो देश में बने हैं, जिनके पास 41% वेल्थ है, उनकी मदद होने जा रही है। जिनके पास गरीब है, गरीब का रोजगार है, उसकी 81 लाख जॉब पिछले समय में गई है, 81 लाख जॉब। तो हमें जरूरत है टैक्स वो भी देते हैं, क्योंकि जब मोमबत्ती खरीदो, डब्बी खरीदो, जीएसटी तो देना ही पड़ता है, चाहे इनकम टैक्स की स्लैब में आए या ना आए, लेकिन टैक्स तो सब लोग दे रहे हैं। तो मेरा आपसे दरख्वास्त है, जो जीएसटी है इसका ट्रिब्यूनल 8 साल में अभी तक सेटअप नहीं हुआ, जिसका होना चाहिए। इनकम टैक्स टेररिज्म बड़ा है फेशलेस असेसमेंट की वजह से। 10 लाख जो इनकम टैक्स के केस हैं वो अभी पेंडिंग है, उसको सुधार करने की बहुत बड़ी जरूरत है। 1/3 पॉपुलेशन लेस देन 100 पर रुपीज पर डे उनकी इनकम है, इनके ऊपर फोकस करने की हमें जरूरत है। इनकम टैक्स तो सब दे रहे हैं, टैक्स भी कलेक्ट हो रहा है, लेकिन जो स्कीम्स हैं, ठीक है, एक बात की आप तो मोहर लगाते हैं आप सर, कि हंगर इंडेक्स में हम 105 नंबर में है 127 में, तो जो 80 करोड़ भारतीयों को आप फ्री राशन दे रहे हैं, ये इस बात के ऊपर मोहर है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम बहुत अमीर हो रहे हैं, एक तरफ हमें फूड भी देना पड़ रहा है, ये दोहरा मापदंड है सर। सो देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा का बहुत बड़ा रोल है साहब। जब पिछले 10 साल में करीब 22 करोड़ युवाओं ने सरकारी नौकरी अप्लाई की, सेंटर को जॉब्स को, लेकिन 7.2 लाख 10 साल में जॉब्स मिली है, जो मोदी जी कहते थे 2 करोड़ जॉब हम हर युवा को देंगे हर साल, वो कहां गए? 15 लाख तो दूर की बात है, जो जॉब थी वो भी हम नहीं दे पाए। सर पंजाब बहुत बड़ा हिस्सा डालता है देश की आजादी से पहले भी, चाहे शहादतें हो, चाहे फूड की जरूरत पड़ी हो, और चाहे बॉर्डर के ऊपर शहादत देने की बात हो, पंजाब बहुत बड़ा हिस्सा डालता है सर। लेकिन पंजाब के साथ वितकरा हो रहा है, पंजाब का कर्जा बहुत बढ़ चुका है, पंजाब को कोई रिबेट नहीं दी कि दूसरे प्रांतों को तो हमें कोई पति नहीं है, लेकिन जहां इलेक्शन होती है वहां सब कुछ चला जाता है। जहां जो लोग लड़ते हैं मरते हैं बॉर्डर के ऊपर, उनके ऊपर सरकार ध्यान नहीं देती। पंजाब के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान देने की जरूरत है जनाब। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, मैं वित्त मंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि लुधियाना तक, क्योंकि बहुत कारोबार है, लुधियाना तक हुआ था, अटारी तक, अमृतसर तक ले जाने की जरूरत है, जो कि बहुत देर की डिमांड है, वो पंजाब को मिलना चाहिए। हमारे सांसद बिट्टू जी बैठे हुए हैं, आप भी पट्टी मखू लिंक 2013 का, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, आप भी थे, उस समय का अनाउंस हुआ है, अब तक होंद में नहीं आया। क्या रीजन है, कोई समझ में नहीं आता। ब्यास कादिया लिंक जो अप्रूव्ड है, अभी तक नहीं हुआ। पट्टी मुकेरिया लिंक जो अप्रूव्ड है, पट्टी मखू लिंक, सॉरी, ब्यास कादिया मुकेरिया तलवाड़ा लिंक 2021 से अप्रूव है। तो मेरा कहने का बात है, टैक्स तो हम भी देते हैं, लेकिन सहूलतें हमें भी तो दे दो ना, हम लोग भी चाहते हैं अपना हिस्सा। तो ये जो तकलीफ है ये पूरे पंजाब की है सर। पंजाब की इंडस्ट्री डे बाय डे कम होती जा रही है। हमारा अमृतसर में सबसे पहला जो सेल टैक्स शुरू हुआ, तो अमृतसर में पहली इंडस्ट्री लगी थी, हमारा पहला नंबर अमृतसर के एक इंडस्ट्रिस्ट के पास है। लेकिन साहब पूरा अमृतसर की इंडस्ट्री तबाह हो गई। रीजन, पहले टेररिज्म की वजह से, उसके बाद हिमाचल को टैक्स हेवन बना दिया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर को भी टैक्स हेवन बना दिया गया। हमारी इंडस्ट्री सारी प्लान करके वहां चले गई। अभी 4 दिन पहले हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने इंडस्ट्री कठुआ में लगा ली, बोले वहां 3 रुपए यूनिट बिकती है, यहाँ 8 रुपए है। तो कैसे इनके साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे? सारी इंडस्ट्री बद्दी और कठुआ में ट्रांसफर हो गई सर। ऊपर से एक्सटॉर्शन कॉल इतनी आ रही है तो भी लोग भाग रहे हैं। ठीक है, वो स्टेट का मसला है, लेकिन सर स्टेट सुने ना तो लोग जाए कहां? अभी बॉर्डर है, बॉर्डर से अभी कितने जनाब, करीब सर स्पीकर सर 13 बम अटैक हो चुके हैं अमृतसर के ऊपर। तो उसको बंद किसने करना है? सरकार ने करना है सर। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए सर। हमारे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट रोके पूरे पंजाब के, सरकार कमजोर है, सेटअप नहीं करा रही, किसानों को पूरा मुआवजा नहीं दे रहे, वहां के
ब्यूरोक्रेट और नेशनल हाईवे पे ब्यूरोक्रेट रल मिलकर उनको लूट रहे हैं सर, वो इसके लिए जमीनें नहीं देते, वो कहाँ जाए सर? सर उसके ऊपर हम क्वायर करें, हमारे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब के रुके हुए सर। सर फार्मर जो देश की रीढ़ की हड्डी है सर, पूरे देश में उसको न्याय नहीं मिल रहा है। स्वामीनाथन पोर्ट पे एमएसपी होनी चाहिए, गारंटी करनी चाहिए सरकार को, वो नहीं दे पा रहे। उसका बच्चे सर उनको प्रॉपर एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल नहीं है क्योंकि रूरल एरिया में रहते हैं, उसके साथ मजदूर भी उसी हालत में जा रहे हैं, लेकिन सरकार के उसके ऊपर ध्यान नहीं है। सर बॉर्डर एरिया के ऊपर स्कूलों की हालत देखिए, जो इंडेक्स बताता है एजुकेशन का, पूरे देश में 10 लाख टीचर की शॉर्टेज है, 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनके पास एक एक टीचर है। तो सर मैं कहना चाहता हूं मैक्सिमम जो रूरल एरिया के हैं, मैक्सिमम, क्योंकि सर जितने भी डेवलप मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनके पास सब कुछ है, लेकिन जो बॉर्डर के ऊपर हैं उनके ऊपर चेक कीजिए, टैक्स तो सबसे इकट्ठा करते हम लोग भी देते हैं सर, लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए। सर फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम, सर अब हमारी स्थिति भौगोलिक ऐसी है, आपको भी समझ देंगे, भौगोलिक स्थिति आती है सर, जब बारिश होती है तो सारा पानी पंजाब में आ जाता है, फ्लड गेट खुल जाते हैं, लेकिन एक पैसा भी, थोड़े बहुत पैसे दिए हैं, लेकिन जितना हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है वो भरपाई केंद्र गवर्नमेंट में नहीं की और स्टेट गवर्नमेंट ने भी नहीं की। सर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड वो सारे रुके हुए सर। सर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड तो देने चाहिए, ये तो किसान की मजदूर की बात करते हैं, तो रास्ते बनने हैं किसान के मजदूर के, वो भी नहीं दिए जाते। तो बॉर्डर एरिया को सरकार को हॉस्पिटल, खासकर सर अमृतसर, मैं आप इशारा कर रहे हैं मैं कम कर देता हूं सर, अमृतसर एक ऐसा सिटी है भौगोलिक तौर पर जो देश, मैं थोड़ी भी सुन लेने सर, अमृतसर दोनों दोस्त तो जी है सर, मेरी प्रधानमंत्री जी जे देन आउणगे कुछ तुसी रोकोगे तो नहीं सर? सर वेलकम करो सर पता क्या है, हाँ मैं जवाब देता हूँ, आपस में मत करो, आपस में बात मत करो सर मैं जवाब देता हूँ, आप आपस इसका जवाब मत दो। नहीं इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन सर मैं इनका वेलकम करता हूँ। प्रधानमंत्री जब एक बटन दबा के पूरे देश के खजाने में पैसे डाल सकते तो यहाँ से डाल दो, ओके, जाके देने में क्या दिक्कत है सर? सर आईटी हब देखिए सर 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में समाप्त कर देंगे सर। अमृतसर के पास बहुत ज्यादा लैंड नहीं है, राइट? आईटी हब अमृतसर को बनाने के लिए सरकार की जरूरत है, सरकार के उसके ऊपर ध्यान दे, एक्सप्रेस वे कंप्लीट होगा तो हमारे आईटी हब बन सकते हैं। सर मेडिकल टूरिज्म, अमृतसर के पास एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, ये भी इस चीज के गवाह होंगे सर। पूरे ब्यास दरिया के बाद माझे को केटर करता है, करीब 1 करोड़ के ऊपर आबादी है सर, एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एम्स भी बाहर है, पीजीआई भी बाहर। सर एम्स हमारे लिए अनाउंस हुआ था, लेकिन इन लोगों ने अकाली दल के साथ मिलकर बठिंडा में ले गए। जनाब हम फिर वहीं के वहीं हैं, बॉर्डर पे लड़ाई हम लड़े, बॉर्डर बंद है साहब, बॉर्डर खुलेगा तो हमारा विकास हुआ। G20 में बोला गया कि सिल्क रूट शुरू होगा, तो सर बॉर्डर भी खोलिए ताकि अमृतसर के लोगों का विकास हो सके। सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बुरी हालत है। बिट्टू जी मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, रेलवे स्टेशन पीयूष गोयल जी ने जहां उसमें खड़े होकर कहा था कि रेलवे स्टेशन नया बनाने जा रहे हैं अमृतसर का, अभी तक उसका पता नहीं चल रहा, उसके ऊपर ध्यान दीजिए सर। सर मैं यही बेनती करूंगा कि वित्त मंत्री जी खासकर अमृतसर के और पंजाब के ऊपर फोकस करें, जिसने पूरे देश का हमेशा ही साथ दिया है, उसके ऊपर फोकस करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Sri P.V. Mithun Reddy, thank you very much, sir. Sir, I would like to recall that in AP Reorganization Act, in Section 90 of AP Reorganization Act, it clearly says that Polavaram will be taken up as a national project, and all the necessary clearances and all the land acquisition will be done by the central government. Sir, recently the Water Resources Department, Jal Shakti Ministry has given the estimate that it is pegged at 60,000 crores. Sir, in the recent budget, we have seen that the height of the project or the storage level is being pegged at 41.15 instead of the original contemplated level of
45.72 meters. This is great injustice to our state. Sir, and one more thing, it was designed for 194 TMC, and if this is going to happen, it is going to be restricted to 115 TMC, and it's just going to be a water retaining structure, not a dam, sir. Sir, I would like to state that 7.5 lakh acres is the contemplated ICAT, and it's going to stabilize 23.5 lakh acres of farmland, sir. Sir, if the project is pegged for only 115 TMC, it is a great loss to the state. Sir, I would like to know, through you, I would like to ask the government, sir, what is the government planning to do by reducing the capacity of the project? Sir, there have been various statements. The government has to clarify, are you going to reduce the capacity of the project, or are you going to restrict the amount being given to the state? Sir, instead of 60,000 crores, whatever is the estimate, if only 30,000 crores is given to the state, which is promised on this very floor of the house, sir, it is a great loss to Andhra Pradesh. Sir, none of the Telugu Desam members have spoken on this. YSRCP has been demanding on this. We want an explanation from the government. We want the government to clarify that there is no loss to Andhra Pradesh, sir. And one more thing, sir, the Visakhapatnam steel plant. Recently, a minister has told that they're contradicting statements, sir. One person said that we're going to support with money, we're going to fund it, and another minister has said that they're going to go ahead with the privatization of Visakhapatnam steel plant. We want the government to clarify on this. We are not going to accept the privatization of Visakhapatnam steel plant. A lot of people have lost their lives for achieving Visakhapatnam steel plant, and now if it is being privatized, it is a loss to the employees, it is loss to the state, sir. Sir, one more thing. The alliance, the BJP, TDP, Janasena alliance is there in our state. Whatever good schemes the previous government has bought, they're huge, they're neglecting in a huge way in this current regime, sir. For example, there is a fees reimbursement scheme, sir, which was started by late Vice Rajshekar Reddy Garu and our former CM Jagan Mohan Reddy ji. Sir, it is a very novel scheme, but anybody's children can study free in any engineering college or any higher education, anything, sir. Government will pay all their expenses. There are almost 11 lakh students who are getting this benefit every year, sir. In the past few quarters, the fees have not been paid by the government to the colleges, and the students are in great distress, sir. They're asking them to pay the money from their own pockets. They're asking them to pay up and then only enter the examination hall, sir. A lot of incidents have happened. A lot of students have openly expressed, but the government is not acting, sir. Government should keep its priorities clear, sir. One is education and one is healthcare. Sir, if the government is not able to support education of poor people, how is the state going to prosper, sir? Imagine somebody is getting a 25,000 rupees salary, sir. How is he going to, yes, sir, how is he going to pay lakhs and lakhs for his suddenly for his son's education, sir? Imagine somebody is getting 15 or 30,000 rupees salary per month. They have a family of 4. How are they going to support, sir? Sir, the government should act immediately. Through you, I request the finance minister to put some sense into the state government's head, sir. And one more thing, sir. The former chief minister had introduced Arogyasri, sir. Through this, anybody can get a treatment in any notified hospitals in the state. Sir, the payments to these hospitals have not been paid, sir. And they've stopped, the network hospitals have stopped giving treatment to Arogyasri patients. This is a huge thing. So a lot of lives are being lost. Sir, as people are not able to pay even 50, 75,000 and they're losing their lives, sir. So these are very important things and the government should act on this. The central government should tell the state government, which is part of the coalition in the state. Sir, and AP has got a dubious record, sir. It is the top in the price of diesel and petrol in the country, sir. Sir, imagine 108 rupees 30 paise is the cost of diesel in Andhra Pradesh, and the bordering Tamil Nadu, it is just 100 rupees, and the Karnataka also is 101, 102 rupees, sir. There's a huge difference of 7 to 8 rupees. Why will industries come to Andhra Pradesh, sir? Why will somebody want to invest there when it's so costly in just in the border, the neighboring states, sir? Sir, I request through you, and I also request the finance minister to put some pressure and reduce the cost of diesel, which is so high in the state. And
Yes, sir. Sir, one way we are losing, it is clearly evident we are losing the money for Polvaram project, and we want to know the reason, sir. Special category status was a promise for Andhra Pradesh, and a package was, they said instead we'll give you a package, sir. What is this package, sir? It's a sort of illusion, and it is an imaginary package. We want the government to spell out what package was given and what benefit AP has got. We are losing in everything, sir. A lot of things which have been promised in the AP Reorganization Act have not been fulfilled. The time of AP Reorganization Act also is lapsed. So we want the government to keep up its promise, whatever have been promised for Andhra Pradesh. And, sir, I would like to bring to the notice of the House. We appreciate the government has given money for development of Amaravati capital, sir. We appreciate in this, sir. But what is happening in the ground level also is a very important thing, sir. A kilometer of national highway costs 20 crores in the same district, sir. The national highway has called for tenders and people have bid for 20 crores. And here the estimate is being jacked up to 40, 50 crores, sir. It is a pure waste of money. And I wish the central government put some officer and go through all these estimates, sir. Lot of money is being misused, and thousands of crores is being wasted, sir. If you see in one way, 17 new medical colleges, we just need 1,500, 2,000 crores, sir, to put them on track. They have stopped what the previous government has taken up. All the 17 medical colleges have been put on hold, sir. And the worst part is they were ready to start, sir. They have taken the employees and they have even allotted the seats. The same government has written saying that take back the seats, we are not able to run the college. One way, they are swindling money in this big way, and the other way, they are not able to put in 1,500 and 2,000 crores into the medical colleges. It is really, it's in a bad state, sir. Whatever good things that previous governments have done, it should be continued. You are raising almost state subjects, no? You are raising state subjects. Sir, central government has given money for Amaravati. Central government has partially given for few medical colleges, and they have been put on hold. They want to sell them off to private people, sir, which we are demanding that it should not be happen. And we are also demanding that central government should step in and help in making these colleges to run, sir. We don't want them to be put idle. We don't want poor people to be at a loss, because 17 medical colleges means 17 hospitals also, sir, where poor people can get treatment. Sir, we question like this, and Telugu people, they try to put mud on us. They are just going on putting allegations. They are booking cases. We are not going to budge, sir. We are going to question. If you see, for the past few months, it's almost a year, not even one thing relating to the state, sir. The TDP people don't have the guts to raise Polvaram issue in the House. They don't have the guts to raise about steel plant. Only thing they are doing is putting mud on us with no facts at all. So this is baseless. I really ask the central government to do justice for Andhra Pradesh, and we want justice to be done in the form of funds to Polvaram project. Thank you, sir. Shri Anurag Singh Thakur. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं वित्त विधेयक के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये वित्त विधेयक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी है। ये केवल कराधान के बारे में नहीं, ये राष्ट्र निर्माण के बारे में है। ये केवल आर्थिक नीति के बारे में नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में है। ये केवल राजस्व के बारे में नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों के समृद्धि और सामाजिक समावेशी विकास के बारे में है। सभापति महोदय जी, आज से अगर 11 वर्ष पहले आप देखेंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री पद के शपथ ली, उस समय हमें किस हाल में देश मिला था। हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, अनिश्चितता का दौर था, और वहां से फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत को गिना जाता था। अनिश्चितता के दौर से अभूतपूर्व विकास के दौर तक लाने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। Prime Minister Modi has guided the nation from uncertainty to unprecedented times, और ये इसलिए हुआ है अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, क्योंकि
ईमानदारी से सरकार चलाई, विश्वास के साथ सरकार चलाई और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो काम करती है। ये एक ऐसी सरकार है जो वायदे पूरे करती है। एक ऐसी सरकार है जो बदलाव लाती है। और जब मैं बदलाव की बात करता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं, तो हमारी सरकार ने बहुत सारी रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये केवल नारा नहीं है, रिफॉर्म्स के माध्यम से बहुत बड़ा बदलाव लाया, जिसके बारे में आगे मैं उसका उल्लेख करूंगा। आज जब लोकतंत्र के मंदिर में आपने मुझे यहां पर बोलने का अवसर दिया, तो मैं कहूंगा हम फाइनेंस बिल में केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम 140 करोड़ भारतीयों की भविष्य और उनकी आकांक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि अधिकतर सरकारों का दुनिया भर में या भारत में भी जो पहले की सरकारें रही होंगी, उनका एक प्रयास रहता है कि कैसे सरकारी खजाना भरा जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बार के बजट में और इस फाइनेंस बिल में वो सारे कदम उठाए हैं कि सरकार के खजाने से ज्यादा लोगों की बचत बढ़ाने में विश्वास रखा, लोगों की जेब में पैसा जाए इसमें प्रयास किया है। और इसलिए कि जन जन के जब बचत होगी तो भारत का जन जन भारत को राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाएगा और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करके दिखाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की जो आज स्थिति है, कुछ विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि दुनिया भर में ये हालत वो हालत है। मैं इतना ही कहूंगा अपने विपक्ष के सदस्यों को, आज पूरी दुनिया एक उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रही है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भी भारत है और अगले एक दशक तक भारत ही रहने वाला है। और शायद इसीलिए आप लोग एक प्रश्न खड़ा करते थे कि क्या मिडिल क्लास के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्या टैक्स पर कर राहत देनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, ईमानदार करदाताओं के ऊपर एक बार नहीं बार बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विश्वास किया है और इस बार तो 12 लाख पर जीरो टैक्स किया है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। और ये जहां देश के अन्य वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, वहीं पर मध्यम वर्ग को भी और उनके अनथक प्रयासों से राष्ट्र निर्माण में उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। इस बजट, इस फाइनेंस बिल में विकसित भारत का जो संकल्प हम लेकर चले हैं, इसमें युवाओं के लिए अवसर है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, हर भारतीय को सफल होने के लिए मौका दिया गया है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का बल दिया है। फाइनेंस बिल 2025 में भारत सरकार की जो कमिटमेंट है टैक्स सर्टेनिटी की, ये पहला, और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस ऑपरेशन को और सरल करने का प्रयास इसमें किया गया है, और तीसरा मिडिल क्लास को अभूतपूर्व टैक्स राहत देने का काम भी हमने इस बिल के माध्यम से किया। जहां तक मैं रिफॉर्म्स की बात करूं, अगर पिछले 10 वर्षों पर नजर सभापति जी मारी जाए, तो अगर उस प्रकाश में कुछ डालना चाहूंगा, पिछले 10 वर्षों में जहां एक और फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, फास्टर रिटर्न्स, ऑलमोस्ट 99% जो रिटर्न्स हैं वो सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से की जाती है। मैं अपने विपक्ष के सदस्यों को बताना चाहता हूं, विवाद से विश्वास स्कीम ये हम लोग लेकर आए, और अब विश्वास, जन विश्वास बिल, जहां जन विश्वास बिल 1.0 पहले आया था, उसमें 180 प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।